and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. তুমি শোনো না, তুমি ফেসবুক থেকে পারলে যেখানে যেখানে যা শেয়ার করো একদম সাঁটিয়ে শেয়ার মেয়ার করে তো, কারণ আমরা দুজনে কেউই করতে পারবো না, আমি নিজে বেরোতে পারবো না। হ্যাঁ পেজ থেকে শেয়ার করলে কি হবে না? কোন পেজ থেকে? এমএসবি পেজ থেকে হবে না তো? আরে হ্যাঁ আরে হোয়াট, গান বাজিয়ে দিয়েছো তুমি? হ্যাঁ গান বাজছে তো, আমি দেখিনি অ্যাকচুয়ালি, আমি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে দেখো। ওকে বাই। হ্যাঁ 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 অমরজিৎ, তো তুমি তাহলে তুমি তো এখনো গেমে ঢুকেনি না, তুমি শেয়ার করে দিতে শুরু করে দিতে হবে। আমি শেয়ার Dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got it. She's such a tease. Bitten lips, bruised. Don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
cause she's sex, drugs, cocaine. হ্যাঁ ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে এলে ইটস স্টিল ম্যানেজেবল, মানে ঠিক আছে। Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a ये taste, लॉबी and I'll show you how इस वाला लॉबी एक्सपर्ट हो जाएगा। cause she's like sex, drugs, cocaine, body so weak. वो रहने से कुछ नहीं इशू है, बट इज ओके। আচ্ছা ওটাকে ক্রপ করা যেত না? চলো বাদে দেখাবো। कोई बात नहीं, আর অমরজিৎ দাদা এটাই সূচক, শেয়ার করে দাও। 4962 49621 हाँ नहीं I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement. Hello, guys. Welcome to the grand finals of Clash Rivals presented by Team Xenon Esports. Guys, today is finally the day has arrived for the finals. So, two of the best team has come across throughout this tournament, fighting each and every round from group stages to knockout stages to round of 16 and qualifying through the semifinals. Team Valhalla versus Team Lazy. So it is going to be an absolute nail biters for the audience. Team Valhalla is going for the first pick and Team Lazy is in the red side. So Team Valhalla has banned first ban as Tulen and Mina, and Team Lazy has banned Hayate and Laveed. So these are their comfort picks. So I think it's the respect bans for each other. And from Team Valhalla, Yui has chose to pick 1v has chose to pick Yui, and let's see what Lazy would be going with Ronin and Ruben. So Ronin has picked Lumbur and Ruben is going with Liliana. I believe that's a great amount of sustain and damage coming from Team Lazy. So it would be very interesting to see what Valhalla is going to pick and counter the other team. So Ranger is going with Oman, I believe. And let's see what Zender would be going with. So Zender is going with Thane. So that's a good amount of sustain for Team Valhalla. So they have enough frontline as of now, right now. So it would be interesting on what Lazy picks to counter Thane and Omen, because they have a lot of sustain. I believe Lazy needs some amount of burst as well, because Lumbur can take quite a lot of damage staying in front line. So Virus is getting picked by Lazy. So up till now, it's like both the teams are very good at drafting, and their draft is kind of balancing each other's picks. So it would be very exciting to see what Kisame and Miriam are gonna pick. So a lot of expectations are on Miriam, because he has a lot of fans in the comment section while he was playing in the semifinals. A lot of fans were shouting his name and giving him shout out. So they were counting on him. Let's see what he will be able to do in the finals. So Brunhilde is getting banned by Team Red. So I believe they want someone. They are restraining Team Valhalla to pick someone who can
give a lot of damage from the backline because Team Valhalla already has a lot of sustain in front of them, so they do not want someone who can stay behind these frontline and can deal damage from long range. So they are missing out. Like वो लोग उनको मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो पीछे से डैमेज दे सके. So it would be very exciting to see what Kisame goes on to pick right now. So another marksman getting banned by Team Lazy. I think they have studied Valhalla very well, and it's very exciting to see that in the first match itself, Team Lazy has banned 4 marksmen. That's pretty amazing. I mean, I have never seen this kind of ban until now in a competitive game where a team bans an entire genre of heroes. So basically, they are limiting out Team Valhalla to pick a marksman hero. It would be very exciting to see what Hisame or Muriel is going to pick as an ADC laner. So 24K Pureman is going to pick the ADC. I think it's like they are taunting him. They are taunting Valhalla at this point of time by showing all the marksman heroes because they have already banned 4, and 4 of these 4 are the best marksmen in the game right now who are in meta. So they have already banned all these 4 meta heroes, and 24K Pureman is going with Tail Enas. So Tail Enas deals a lot of damage late game. From mid game to late game, she scales pretty well, and with the amount of frontline Team Lazy already had with Lungur and Virus, Tail Enas is going to deal a lot of damage from the backline. So Team Valhalla is going with Fennec. Muriel is going to pick Fennec on jungle because he is the main jungler in the blue side. He was not doing quite well in the semifinals, but we have a lot of expectations on him because he is a brilliant player and he has shown his potential throughout this tournament. Although he didn't had a lot of great matches in the semifinals, but his fans would be counting on him on today. So let's see what he will be able to do. Fennec being a very good marksman when it comes to play against tanky teams. So since Team Lazy already has a lot of sustained heroes, I think Fennec is a good pick. So let's see if Muriel will be able to execute his game style, his gameplay in this match. With this, Team Lazy is coming up with Astrid Jungle, and if he locks Astrid, this would only mean that they would be going all in and would be invading and initiating fights because they have a lot of sustain. If you see, they have a brilliant sustain and a backline. So it's a complete team at this point of view. But no, Spike is going for Roxy. Roxy is another hero which has a lot of sustain. So that's pretty much equaling each other out. So it would be very exciting to see how the match pans out. So the game is going to kickstart in 40 seconds. Before this, I would like to thanks to everyone who has stayed and helped in this tournament coming forward, from the Clash of Titans community to the players to every team that joined this tournament and did a brilliant job in the promoting the tournament. Also special thanks to Team Xenon Esports who brought this Xenoverse Clash Rivals tournament and tried to promote the game. And also a very huge thanks to Mr Bisho Live Gaming who has sponsored this tournament and is working in collaboration in bringing up the community for Clash of Titans. So please guys, show him some love. Go and subscribe him. Go and follow him. He is there on Facebook and YouTube. He is a brilliant streamer. So show him some love and give him some love back as he is trying to promote this game. So the match is about to come live in like 5 seconds. So it will be very exciting. Both the teams have done pretty amazing in the entire tournament. Team Valhalla has been undefeated, and Lazy has also powered through their matches. They single-handedly destroyed all the teams coming throughout this tournament. It's
an equal match of the quality of players that we will be seeing in the best of 7 in this final. So this will be a very exciting match. Guys, go and spam the comment section. Go and spam the team you like, you support. Right hashtag lazy prophecy. Right hashtag Valhalla. Let's see how many supporters we have for each team. So usual rotation coming up from both sides. None of the team is trying to invade. Team Red is trying to protect the buff, and in the top lane we are seeing that both the teams are doing pretty well, and usual rotation coming up. Nothing, no such invade is coming. Roxy is trying to annoy Miriam at this point, but she backed out in the dragon lane. We are trying to see that initiation is about to happen. Thane is trying to invade. So Ruben is dealing a lot of burst damage from back line. Right now, Thane is trying to protect the red buff, and Ruben and Ronin is trying to invade the red buff. Sorry guys, we have to go for a technical pause. I think one of the team is lagging at this point of time. So this because most of the players are playing on their internet service provider, it may happen sometimes that they lag. So we will have to wait until the pause is resumed. So guys, this will be a very good match. Let's hope that the match goes for all the 7 matches. So in semi-final, we saw a brilliant match between Zodiac and Valhalla. It was a nail biter. It went to all the 5 matches, and Valhalla was able to come back and secure the last win in the last match, in the last second, and they are now here in the finals. Hopefully, they will be doing a great job fighting against Lazy. Lazy has been brilliant throughout this tournament, and so has been Valhalla. It is a very exciting match. So in the mid lane, we are trying to see in the mid. Sorry, guys, there is another technical pause. I think there is some technical difficulties going on. We are very sorry for the pause. So we are back to the match, and the match has resumed. So we are seeing a usual rotation. Both the teams are trying to occupy the spaces and initiate the dragon so that they can take their first objective. At this point of time, I can see that Team Red is going for the dragon while 2 of their teammates is trying to engage, but the rest of the team is staying behind and trying to take the dragon. So they would be successfully able to take out the dragon, but there is a gang going on. There is a 5v5 fight going on at this point of time, and this is brilliant. Team Red was able to wipe out 4 of the members from Team Blue and was also able to take down the dragon. So this is going to be a very good thing for Team Red, for Team Lazy. It would also mean that they would now be on bigger and greater amount of gold than Team Valhalla. At this point of time, I think the gold lead is of around 1,000. So this was a very bad initiation from Team Blue. They were 4 men down. And right now, we can see that Thane is trying to invade the buff, and Lumbur is trying to protect the buff for his teammates so that he can take the blue buff. So in the bot lane, we see that Melhawk is trying to protect his turret.
and Fennec is rotating towards Slayer, and I think they would be going for invading the red buff from Team Red, and would probably be successful in taking his red buff. So we can see that Team Blue is okay. This was this like Team Blue did went to take out the red buff from Team Red, but although they were successful in taking it, Team Red, instead of like fighting it out, they went and invaded the red buff from Team Blue and was also able to take that out. So while we are seeing the bot lane, Team Blue was successful in taking the Slayer from top lane. Right now, Team Red is trying to take down the bot lane and take down the turret. 4 men are lining up for a gank, and Thane is trying to protect it with Malok. Let's see if they will be able to protect their turret, while Telenas is only targeting the turret and will be able to successfully take down the turret. Yes, he does. But will they face the consequences of staying too long in the bot lane? I think both of them will be going down, and Malok was able to take 2 of them out, and this Thane is trying to get back from it, as they already successfully got 2 of the people. I don't think they would be coming in. Okay, Malok should not have come back in such low HP. I think retreating would have been the best idea, as Thane already retreated. So I think there was a lack of communication, and for that they had to pay the price, and Malok was traded instead. So for now, there was an equal trade of towers, as Team Blue was also able to take top turret from Team Red. So it was an equal trade of towers right now. So we can see that both the teams are doing pretty well right now. Although Team Lazy has taken 5 kills and Team Blue has taken 3 kills, but if we see the gold difference, there is none. Both the teams are almost on equal terms of gold. So this would be very exciting to see how the late game goes, because I still believe that Lazy has a better late games scaling heroes, because Telenas deals a lot of damage from backline, and they have a lot of sustain in frontline. So I think Valhalla needs to play this very well and needs to prioritize all the objectives in the early game, so that they do not take a lot of pressure in the late game. Right now, Red Team is going for the Dragon. So our other caster, Mortal, is going to join us. He was not available for some time due to technical reasons, but I believe he is shortly going to come, and I know you guys love him, right? You guys loved him in the semifinals as well. I think he will be joining us very soon. I will be waiting for his introduction. Hello, Aizen. Hi, so Mortal is back. Mortal, your voice is a bit low. I think if you can fix that. Okay, just give me a bit. Actually, I'm not at home, Yeah, so I'm having some troubles just setting up. I just came back to the place as soon as I could. I hope my voice is clear now. Is it all right, Yes, Aizen? yes, it is fine. So, see, guys, Model is so determined to cast for you guys that he was busy. It was a Sunday night. He had some personal commitment, but he did come back and joined us. So, I'm very thankful to Mortal. So, Mortal, there is a demand for you, since you are a better caster. So, people are demanding you. Okay, so Please continue. Okay, people love me so much. Okay, I'm just way too flattered right now. Okay, so guys, I was just trying to become a little bit more handsome, and with that much flatterness, I just become a lot more. So thank you guys for just demanding for me and just call for me whenever you want. And thank you, Azen. So do you want to just pick me up to the pace, like what happened till now? Because I was Yes, not so able to Mortal. watch properly. Yes, so Mortal, both the teams have picked very well, but we can see that Lazy has a greater amount of late scaling, late damage scaling heroes, and they are also winning on lanes. So as we know, Lazy is pretty fast in taking down turrets, and that's what we
can see right now, they have taken out 3 outer turrets from Team Valhalla. Yeah, we know that Lazy has been always plays a game of prioritizing turrets over anything. They just go for the turrets whenever they can. I think they are just doing that right now. But Yes, and they as well, are. goal lead, I would say is not very much. The blue team can make a comeback with just this. I think it's just about how can I say it, like just one gang fight. If Yes, it blue team is wins true. one, It is true. Yes, yeah, model, it is true. However, as I said, Lazy has a better late game scaling heroes. So Team Valhalla needs to play very well and will have probably to end it as soon as possible. But right now, Lazy is already dealing a lot of damage. You can see that Talenus is going insane right now. yes, I just saw that there was kind of a bad initiation or fight by Malok, I guess, and he shouldn't have went in when they are kind of behind and an enemy team has a Slayer with them. So I think he should have just wasted their time as much as he could. By the way, oh, there is a Phoenix, the red team. Yes, it's your favorite hero. I know. Yeah. You noticed it late, but and another exciting thing that I want to tell you about is Lazy banned 4 marksmen. So Okay. all the marksmen, all the bans were of marksmen. Hayate level, every marksman was banned, and that took away the option from Valhalla to pick their main heroes. So I think they were prioritizing the ADC player of Valhalla, and they banned everything for him. I think they are just playing anti-Kisame gameplay right now. As you can see, we know that Kisame has been playing a wonderful marksman in the prior rounds, and we know that he's he's a wonderful player, and he can make quite a bit of impact on the game. So Yes, as we saw in the semi-finals itself, that Kisame did a brilliant job with his ADC, but right now he was forced to play. He was forced to play Malok, and instead Miriam had to go jungle Fennec. And this is a brilliant gang coming from Team Blue. They were able to take down all 4 heroes of Team Blue. So will this be a turnaround, Mortal? I think this will be, and as we know that, I think it's Telenus guy is going to be. Oh my God! Did Telenus took out everyone single-handedly? What? What am I seeing right now? This is not Telenus. I think she's something else right now. Just think about it. She was just in the bush. She just She one-shotted a Titan. Nitro went insane. He went insane. Absolutely insane. He dealt a lot of damage and took out 4 heroes. So all the advantage that Team Valhalla was able to get with the prior gang went wasted because Telenus destroyed them. Yes, I think right now what Team Blue needs to do is just think about Telenus right now. What do you say? Because Telenus is just way too fed. Yes, he is way too fed, and they are now trying to take out the Slayer. So Lumbur will face the consequences of overextending and going too deep in the blue side. Stole the Slayer, Aizen. Stole the Slayer. I think I was so busy watching Lumbur that I missed out on that. Yeah, I think Miriam saw my Phoenix gameplay and he was inspired by me because I do such wonderful things. Yes, मेरे को भी bro यही लगता है, but it's a very exciting match. Like हम लोग ने देखा है दोनों टीम को, they did brilliant job throughout this tournament. We saw Valhalla not destroying, but playing very well and coming back in the semi-finals. So this match, मतलब ये तो मजा आने वाला है भाई ऑडियंस को. पॉपकॉर्न ले आओ गाइस सब लोग. और मेरे यहाँ पे भी भेज दो गाइस. Because if I get from my table right now, you are going to miss me, and I don't want you guys to miss me. So yes, but Mortal, I would like to say that the Slayer was kind of wasted by the blue team, although they were able to steal it, but nothing came out of it. They were not able to take out any turrets. So let's see how this goes. I think even more than just wasting the Slayer, I think what blue team got was the time. If red team got Slayer right now, they would have just pushed inside blue team's inner turrets. So rather than just being if the Slayer was useful or not, I think it's about the time that blue team got.
Yes, that's true. So right now we can see that the amount of goal difference is not much between both the teams. They are almost equally on terms of goals, so that is not going to make a much of a difference right now. What will make a difference is how they execute their gameplay, how they initiate, and how the backline deals damage. So it is right now, it's all up to the skills of individual players. So we will have to see how this goes, as we know both the teams play really well. Also, I would like to tell to the audience that there is a great initiative coming from Team Xenon. We have introduced the second screen for this MOBA game. So you guys can probably see both the screens at the same time. I hope you guys are liking this new innovation that we tried to bring in. So it is probably the first one which will be happening in Mr Bisho Live Gaming. So it's a collaboration tournament from Team Xenon and Bisho Live Gaming, and we will be doing a lot of innovative things coming in future. So guys, please like and subscribe both Team Xenon and Mr Bisho Live Gaming, so we can do a lot of such interesting stuff for you guys in future. Yes, guys. If you like this feature, please comment and like the stream as much as you can. And if you don't like it, please respond and give us your feedback, so we can do much better job in the future. So guys, what do you think about this? If just let us know whatever you think about. Even if it's harsh feedback, we will take it and we will do better in the future. And this is all for you guys, not for anyone else. We just want you to have the best gaming, streaming, enjoyment experience. The experience is that we just want to enhance it to the best it's possible. And I think there's going to be a fight in the Slayer. So since it is an infinite Slayer, both the teams will be rounding towards it and will try to take it. So we will have to see how this goes out, because this Slayer is very important for both the teams. So we can see that a gank is going to happen, and right now Red Team is like Tailwinners is able to deal a lot of damage. This is what I was scared of in going forward, that Tailwinners will be dealing a lot of damage from backline. But kudos to Mellow for taking so much damage, and Omen will be able to take down the mage of Lazy. But let's see, even Omen has a lot of sustain. Will he be able to fight this out? I don't think so. I think, Aizen, this is the end of our first match, because the CD on their respawn Valhalla, because this is a best of 7, guys. So hoping that all the 7 matches are played out, as it will be very shortly in the second match. Yes, guys, we'll be back in just a bit, so don't leave the stream. Please
comment. And if in the meanwhile, as we are taking a short break, go ahead, subscribe to Mr. Bisho in his Facebook, YouTube, comment, go to Team Xenon's Facebook and follow them. Please, guys, show as much as support you can towards so we can bring out more programs for you in the future, more tournaments, more competitions, giveaways, and much more will be there. So it all depends on your support. As much as support we get, we can bring more stuff for you. So guys, we'll be back in a bit. Yes, guys, chalo. कि लगातार वैसे होते गया था। তেজ ভাই ল্যাগ দিচ্ছে নাকি? Usually से लगा। বিটরেট আচ্ছা তুমি যেভাবে করো ইউটিউবে ওরকম বিটরেট দিয়ে দাও তাহলে তো হয় ইউটিউব যখন ইউজ করো। দরকারে তুমি 720 করে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি লাস্টের ফাইনাল প্রোডাকশন 720 তে করো, বাট ল্যাগ না হয় যেন, বিটরেট কমিয়ে দাও একটুখানি। সেটাতে আমিও বুঝি না। এইটাতে নেট কম খাওয়ার কথা। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আব্দুল্লাহ, তুমি গান লাগিয়ে দিয়েছো মানে? हाँ एक सेकंड अब्दुल्ला, एक सेकंड इसका लैग नहीं हो रहा है, इसका ना फ्रेम लाइक फ्रीज हो रहा है एक सेकंड, थोड़े सेकंड पे। I checked right now, उसका स्ट्रीम लैग नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रीम ना एक लाइक आफ्टर 2 सेकंड इट गेटिंग a 1 second मतलब ब्रेकआउट। ब्राउजर का इशू हो सकता है। सिस्टम में बहुत कुछ है क्या? আমার মনে হয় ব্রাউজারের ইস্যু। অন্য ব্রাউজার দিয়ে চেক করে দেখো তো, অন্য ব্রাউজার দিয়ে ট্রাই করে দেখো তো। मैं प्लीज फटाफट फिक्स करो, आई एम शेयरिंग द लॉबी आईडी, ठीक है उनको। ओके ক্রোম আচ্ছা ক্রোমে করো না, তুমি কিসে করছো এখন? अरे মোজিলা তো বেটার না, ক্রোমে হলো বেশি র্যাম খায়, বাট ক্রোমে ট্রাই করে দেখো এখন কিছু ট্রাই করে দেখো। রিসেন্ট সব যা আছে সব ওগুলো বন্ধ করে দাও, রিসেন্ট ওয়ার্কিং এ কিছু যদি থেকে থাকে। আচ্ছা ওয়াই স্টুডেন্ট है আমাদের ভুল ছিল, আমাদের টেস্ট স্ট্রিম করা OBS का सेटिंग तो होता है, वो OBS का उसका पहले यूज नहीं किया ना, तो इट शुड बी एवरीथिंग शुड बी सेट प्रॉपर्ली, बिटर सब कुछ मिलाना पड़ता है, वो होता है वो चीज प्रिंटर के साथ भी होता है। इन बिटवीन स्ट्रीम आल्सो बिट रेट कम कर सकते हैं ना, तो बिट रेट थोड़ा कम कर दो, आई थिंक इट विल गेट बेटर। फॉर राइट नाउ बिट रेट थोड़ा कम कर दो। कितना बिट रेट है अभी? Guys 5590 ओके आई एम गोइंग म्यूट। एक बार চেষ্টা করো তুমি বিট রেটটা नहीं কমিয়ে। मैच स्टार्ट होते ही म्यूट जा रही है, पहले फिक्स करवा ले जो भी करना है। बिशो का इंपॉर्टेंट है, रीच इंपॉर्टेंट समझ, ठीक है, नहीं तो मैं शिफ्ट करवा दूंगा पूरा फेसबुक से वाईटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वैसा शिफ्ट करने में क्या होगा पता है, पूरा स्ट्रीम बंद हो जाएगा बीच में से। फिर से करना पड़ेगा बट वो भाई स्टॉप करना उसको, इट्स नॉट गुड। फाइनल है तो समझ इसका चीज का इंपॉर्टेंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से सब हुआ तो हाँ मुझे लगता है लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम अस, हमारे एंड से। फाइनल भी ये वक्त निकलेगा तो मुझे लगता है कि क्या मैं फेसबुक का एंड कर देता हूँ, तो इतिहास भाई नहीं और एक मैच के लिए देखो, सुनो और एक मैच के लिए बिट रेट कम करके एक बार देखो, जस्ट रिड्यूस द बिट रेट एंड ट्राई इफ पॉसिबल। स्ट्रीमिंग क्वालिटी को 620 720 कर दो, तुम जो देख रहे हो ना उसको भी 720 कर दो। 1008 मतलब कोई एक जगह में 720 कर दो, दोनों जगह में 180 मत रखो।
either browse it on 720 and stream it on 1080. Okay, और स्ट्रीम like browse it on 1080, stream it on 720, नहीं तो डबल क्वालिटी खराब हो जाएगा. वे नहीं होगा Stream वो समझ नहीं stream रहा. full quality में देखना better I think. Okay guys, go mute. হ্যাঁ পারবা বিটেড করতে পারবা কোনো Okay okay guys. मेरे को Back to game. जल्दी से ये बताओ. वेट मेरे को 5592 जल्दी 5592. एक सेकंड रुक जा मेरा गेम ओपन हो रहा. आइजन एक्सेप्ट करो. আচ্ছা आ गया. বিটেড 1000 দিয়ে দাও দাও তো তেজ বিটেড 1000 দিয়ে দাও 1000 অনেক কম. মিনিমাম 2500 দাও. আচ্ছা Okay guys, ওই ইন্টারনেটের উপর ডিপেন্ড করে আর কি বিটেডটা. okay guys, जो भी है कर लो अपने से. अभी म्यूट जाओ सब लोग. হ্যাঁ I'm going starting the match to starting the match in एंड ब्रो जरूरत पड़े तो मेरे को इधर कॉल कर दे फेसबुक में. ठीक है अब्दुल्ला. म्यूट. ओके मैं टेक्स्ट कर दूंगा अगर कोई कुछ. Hello guys, welcome to match 2. So this is the second match. The first match was already won by Lazy. So Lazy did a brilliant job. What do you think about this, Mortal? I think this match, I just know, I think Valhalla will make a comeback. I'm positive about that because I know that Kisame will do something in this match. I hope. Yes. Because last match, I think they made a silly mistakes, or I think they had a minor rotation faults and initiation faults. Besides that, I don't think they had a lot of mistakes in the match. But let's hope for the best in this match. Yeah, so what, as far as I have seen Lazy play out throughout this tournament, I see that they capitalize on the smallest mistake their opponent does. So even though Valhalla were playing very well and they were almost equal in amount of goals and also turret throughout the first 7 minutes, but as soon as there was a one single mistake from team Valhalla, Lazy capitalized on it and they started taking out towers, and that limited Team Blue to rotate in the map and initiate ganks. So Team Lazy is very good at capitalizing the smallest mistake. So there is no room for making mistakes from Team Valhalla this time if they want to make it 1-1. And Mortal, as I said, marksman being banned. So will we see another set of 4 marksmen being banned by Team Lazy? I don't think so. So no. Yeah, so they have banned Tulin and Lumbur this time. So I think they're giving one chance to Team Valhalla. No, I don't think so. I think Aizen, what Team Lazy is trying to do is get a strong marksman for themselves, because they will have the second and third pick after Team Valhalla.
So I think they will just go for the second strongest or the third strongest marksman in the game right now after Hayate. I think that's my assumption right now. Yes, that's true, Martu. So we are seeing that Team Blue has banned Tulen and Lombur, and Red Side has banned Hayate. So Mina has been picked by Ronin, and 1v and Zender went with a combo with a lot of CC and sustain. So Tain and Illumina coming from 1v and Zender. So I think this time Zender would be trying to do the CC and stop the initiation coming from Lazy. So this is probably the mindset that they are going in, because Lazy went all in with their tailenders dealing a lot of damage, and there was not like great amount of CC to stop them. So this time they have picked Tain and Illumina so that they can reduce the chances of getting invaded by Lazy. I think this match is going to be a well drafted one because Team Lazy as well as Valhalla has a lot of options on their hands right now. Because last match, as you said, that I think it was Lazy who banned all the marksmen, if I'm Yes, not they did. wrong. So they Yes, they just did. shut down Kisame totally. And that's why I think he was forced to pick Malok. And Mhm. that, I think, kind of weakened their side lanes, if I'm not wrong, Aizen, because as I saw, Malok had not much of an input in the match. He Yes, was that's trying true. his True. best. He So was obviously trying his best, but he didn't have as much as output as other members of his team before. yes. So what Valhalla did was, instead of picking up proper ADC in the ADC lane, they went with ADC jungle, which was played by Muriel, and instead they sent Malok to the ADC lane, which was a dragon lane. So that's what I was coming into in the last time, that they do not have proper late game damage dealer. So Lazy had the better scaling heroes in the late game coming from Talenus, who was dealing an enormous amount of damage. So I think that's where they missed out the draft. But this time around, Valhalla has picked Laville, so they have a good amount of CC in front of him, and Illumina as well doing a lot of CC, and Laville would be dealing a lot of damage. We will have to see how Lazy responds to these picks and how they counter pick against And these heroes. I think you just missed that Team Valhalla just banned Telenus, I guess. I'm not sure if it's Telenus or not, but I Yes, it think is. It is. I think Yes. I'm practically going blind. Yes, so we all know this is coming throughout the match in the tournament, that Lazy go insane with caffeine. I mean, it seems like they are in some sort of steroid or something whenever they play caffeine. Like, I have seen them doing amazing job when they are on caffeine. So they take out turrets so fast, so freaking fast, that you won't even recognize like at what time the game is going on. It would be 5 minutes, and you'll see that four of the turrets are already missing from the opponent lane. So that is a respect ban coming from Team Valhalla, taking out Caffeine, and from the previous match experience, they have also taken away Tail in us. So the basic idea of Lazy is playing with a marksman which can take out turrets quite easily. So those two marksmen are banned right now. So we'll have to see what they pick. So 24K Pureman is going with Violet. What do you have to say about this model? I think they are just going. I think they just have the same mindset as the last match because they are just going for that pure late game damage. And Mm-hmm. they have just a simple mindset where we will give our marksman the space to get fed, so fed that in the late game she doesn't have, or I'm sorry, so the marksman doesn't have to worry about anything. That as we saw in the last match, Team Blue was doing great. The Blue was, I think, Valhalla. Team Valhalla was doing great in gang fights with their Phoenix. They were just thrashing out their front liner, the mage, and everyone. But the one thing that they were not able to get to was Kaelin, because she has an insane range, as we all know, and from a distance, she was just giving a high amount of damage, and it was, I don't think that was tolerable by them, and they just died one after another, and we saw that in all the gang sizes.
Yes, that is true. So we are seeing a good draft by both the teams. So we see that Necroth is being picked by Lazy, and we are seeing Kriknak being picked by Valhalla. So I think the draft is quite equal in terms of power and sustain for both the teams. We will again have to see how they uh, like make use of their skills and initiate and gang. So this will again be an exciting match. And my pick on this draft is not specific to a particular team because I think both the teams have drafted pretty well. Okay, so you have to choose a team. Choose a team. Okay, go ahead. If see, in terms of drafting, I believe both of them has countered each other very equally in terms of sustain and dealing damage and heroes which can go in and come out and take down their their main damage dealers. So both the teams are equal in terms of drafting. But if you have to tell me to pick one team, I would probably go with Valhalla because I want our audience to enjoy all the 7 matches coming in this finals. So since Lazy has already won the first match, and I always love the team who is trying to compete and come back in level terms. So obviously I will go with Valhalla. What Okay. about you, Mortal? I'm going with Lazy because I want something a bit more exciting. What I want Yes. is Team Lazy winning 3 matches and then Team Valhalla making a comeback. What do you think about that, Aizen? Let's see how that works. But right now we have a technical pause. There is a technical difficulty right now, so I would ask our audience to please give us 2 minutes until we can resume it. And I don't think this technical issue will take a long time to solve. So please, guys, stay with us. Yes. So So Aizen, as I am informed right now, it would be probably starting in 60 seconds. So they are facing some lag issues and they are trying to fix it as soon as possible. So we will come back to you with a brilliant match coming ahead. So yes, Model, please go ahead. What you were saying? and I was just saying that I think we should have a little bit of uh, talk with our audience. What do you say, Aizen? Like people are Yes, going that crazy in the comments right now with for their teams or supporting their teams. So I think we should ask people what they think are going to win. yes. Let's spam the comments, guys. Go ahead. Tell us in the chat who do you think is going to dominate the finals and is going to win. Okay, So guys. yes, Mhm. Okay, guys. Spam in the comment who is going to win and give us a one-line reason for it. And the one we like the most is going to get a shout out from us, and we'll read his comment live. What do you think, Aizen, about that? Yes, that would be quite interesting stuff that would be coming from Mortal. So yeah, while you are spamming your comments, I would like to give another shout out to Team Xenon Esports who is hosting this tournament for their 3rd year anniversary of Xenoverse. So the tournament is Clash Rivals. So a huge shout out to Team Xenon Esports who is doing a brilliant job in increasing the popularity for this game and trying to build up our community. Also, a very big shout out to Mr. Bisho Gaming Live, who is the sponsored partner for this tournament, who is doing an absolutely amazing job in trying to create the community for this game. We guys are very thankful for him that we are able to deliver this brilliant tournament with his help. So, guys, please go and show your love for him. Go and support him. Go like his page. He is there in Facebook. He is there in YouTube. So, guys, please go and let him know that we absolutely love his efforts trying to increase the game's popularity and the community and trying to build everything from scratch. Yes, guys. Please show your support for Team Bisho, Mr. Bisho, and Team Xenon because they are trying their best right now. Just think about it. They get they are doing so much for the teams and you guys, so you guys can enjoy a quality streaming and experience. Think about it. As much as we can grow this community, help Mr. Bisho and Team Xenon, we are
going to get a lot more content on Clash of Titans. Think about it. It's just a win-win game for all of us. So guys, come on, I don't see any comments right now. So spam as much as you can. One lucky one is going to get a shout out from us. Mhm. Yes, that's very true. So I can see a lot of people asking about us on who is casting. So guys, I would like to introduce myself. I am Aizen. You know me by the name Wishes in the community. So I am casting, and with me, my casting partner is Mortal. He is a brilliant player, and as well as he's doing a great job in casting. So Mortal, as I said, people love us. People absolutely love us. They're asking all about us in the comment section. I know, Aizen. Everyone loves me. I know. I don't know about you, but everyone loves me. I know. Okay, I mean, even if they hate us and even if they're asking about us, I'm going to say that they love us. Oh, all right, don't guys, take we are back into the match. Yes, Aizen. Don't take my popularity, please. Okay, People guys. love me. So Only usual, me. yeah. So usual rotation coming up for both the teams. Since Lazy is already 1-0 up in this tournament in this final leg of best of seven, I think they would try to play this aggressively. Yes, Aizen. I think they are going to go aggressive because they need to give their marksmen as much as the space they can. Yes. So this would be a very exciting match in the Dragon Lane as Lavelle also deals a lot of damage and also Nitro has a lot of burst damage. So it would be quite exciting to see how the late game goes and which marksman performs better than the other half. So this time around, still there is usual rotation coming up. The blue team is lining up for the bottom gank, and we will have to see if they are successful in setting up another gank on Kisame. Yes, I think they are going to bully Kisame a lot because they know if he gets fed up, he's going to be a lot of trouble. They Mhm. know he's a brilliant marksman player. Yes, that is very true. So red team is trying to line up, and Thane is coming up with a brilliant initiation and will probably be able to take down Mina. Yes, Kriknak did a good damage Miriam, but Miriam was traded out instead. No, Miriam did. Miriam went out of it. And I think, Aizen, it was Miriam who died. Yeah, did he? I kind of missed out on it, but it was an equal trade, and right now the red team is lining up for the dragon. So we will have to see if they successfully take it. I think they will be able to take it because blue team are quite separated out in the map right now. I think they are just regrouping right now because they lost the first gang fight. Even if they got a kill, I Uh, think they are just trying to regroup and think the best possible outcome that they can have right now. yes. And Miriam So is going Miriam, again on with Friknak on top lane. yes, Miriam. Oh God, Miriam was able of the heroes from Team Blue single-handedly, but at the end of it, he was traded out by the mid laner of Team Blue, but it's still a win-win for Miriam as he was able to take out two kills. Yes, I think Miriam is being a little bit rush. He's being a little bit greedy right now. He's getting a lot of Yes, kills, but at the same time, he's getting shut down after each one. I think he yes, needs to calm down a little bit right now because ye- he will have a mhm. tough time if he gets a lot of deaths on his dial. What do you think, Yes, Aizen? Okay, and what lane? There's yes, a gang. that is, yeah, that is true. So in bot lane, we can see that both the teams are lining. The blue team has already dealt a lot of damage and is trying to back out, but we'll have to see if Miriam goes again from the backline and tries to take down one of them. So they are going in with the damage coming from Laville and Mina. They tried to initiate and hook the red side players, but
as the blue team was already low, their damage dealers were already low, they did backed out. We can see that Omen is trying to gank Illumina and was successful in taking her out along with the help of Spike. So I believe right now they would be lining up and going towards the top lane and will try to take down the Slayer. And I think Ike is playing a brilliant macro right now. What do you think? He's being a total brainiac right now. You can see that he's just going. He knows when he can win a fight. He just goes in. He takes a kill. He comes out. He clears a jungle. He then starts the rotation all over again. And we Yes, can that see is Miriam true. trying to steal the blue. Yes, Miriam was successfully able to take out the blue buff from Sprite. There will be a 1v1 going on, but the mid laner did join, Ruben did join the fight and was able to take out Pike. So did the Slayer reset? I believe it did reset, or was where the blue side I successfully think able to take down the Slayer? I think Miriam, as I said earlier, Miriam is again being a little bit more than too much greedy. What do you think about that gameplay? He just went for a blue. Yes. The only thing that I can say right now is that Miriam is playing good, but he is taking the kills, but is also dying a lot. So in that Exactly. regard, it is not quite beneficial for Team Red. But on the other hand, we see that Spike is playing a very careful yet a very promising game right now. He is dealing damage, he is getting some kills, and then he is backing out and farming. So in the bot lane, we see that both the marksmen are fighting out each other. And sorry, it was not the marksman actually. Alain was there, and Alain was able to take down Ronan. So Yes. Alain is again going 1v1 with Omen, and I think Alain will go down. No, Alan was able to take out another kill. So this is a brilliant one coming from Ranger. And as you can see that Allen just took out two kills. Yes. So model, as I was saying, that Lazy is quite brilliant in terms of uh, capitalizing on small mistake that the other teams make. So Yes. I think this is what they are doing right now. So Lazy is capitalizing on the they did a little Valhalla did a little mistake, and now they are capitalizing on it and going all in against Valhalla. Yes, I think both the teams are doing pretty good, but I think the thing they need to do right now is just think about what the thing they shouldn't do. I mean, some some players are being a little way too much greedy, and that's just proving way too much a loss for them. What do you think, guys? Yes, And we that can is true. see Violet with both the buffs. Yes, so they are trying to feed Violet at this point of time. It is already 7 minutes, and both the teams, although they are on equal level of terms, only there is a small difference. But we can see that the red team is losing a lot of turrets, which will only mean that Lazy will have a better map to travel and initiate fight. So this is what I feared for Valhalla, that mid game is the game where Lazy comes in and tries to dominate and take that map advantage by taking out turrets. So this is what they are doing right now. And look at this brilliant gangs coming in from Lazy. They were able to take down four people from Team Valhalla and was also able to take the bot turret. Kriknath is coming in but will be taken down. And as I was saying, and I want to say, as in this match, it's not like team Daisy is being they dominated from the mid game. They are Mhm. dominating from the starting. As you can see that their jungler, Team Daisy's jungler is playing. To be honest, as I am
also a jungler. I like to play jungle as much as I like to play the gold, but the thing is, Team Lazy's jungler is playing what one would say textbook style. He's just being what one should would give example about. Like we just tell new junglers, oh, you have to go like भाई तू जा एक fight कर, buff ले, jungle ले, वापिस fight कर, turret ले, fight कर. It's just that. He's Yes, just being a आपने text बिल्कुल of सही बोला. Like Lazy's jungler Spike बहुत ही उमदा खेल रहे हैं at this point of time. He is all focused on objectives on the lanes. He needs to gank and then go back to his farming and take out the turrets. So बहुत ही उमदा खेल रहे हैं right now. So Lazy is taking out turrets and उन्होंने Slayer भी लिया है and Slayer उन्होंने bot lane पे छोड़ा है and I think they would be able to take out the bot turret, the mid bot turret. yeah. And guys, I would just like you praise Aizen on that big word unda. Think about it. Yes, I am trying. So Ellen has initiated the fight and will probably be able to take down few heroes from Team Blue. So Valhalla is coming back. Is this the time to, I mean, to turn the tables? What do you say, Mortal? I think it can be, and that was a wonderful, wonderful backstab by Allen. He came out of nowhere. Team Lazy was not even like they उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इधर से आ जाएगा. मतलब बंदा भाई कहाँ से आ गया? प्रकट हो गया वो Yes, प्रकट. but yes. So yeah, so another brilliant word used by Mortal this time. Prakat ho Yeah. gaya. So he played brilliantly. If you did check that gank, Lin did manage to sneak in from behind from the back lane, and he took out a few heroes of Lazy. So with this, they will get an advantage and will probably be will come back to equal terms of gold, which they did right now, and they were also able to take out the dragon, the enhanced dragon. So I hope Valhalla will be able to come back and take out few turrets of Lazy so that they can win this round and go 1-1 in match 3. Yes, and as you know, guys, we don't support a single team. We just want a lot of matches. We are just here to watch games. That's it. Yes, that's very true. So मतलब दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला है पूरा टूर्नामेंट्स में थ्रू आउट द टूर्नामेंट इफ यू डोंट नो मॉर्टल वेलहला हैज बीन अनडिफीटेड इन एनी ऑफ देयर मैचेस. So they came, they won all of their group stages matches. Knockout उन्होंने जीता best of one. उसके बाद they went to quarter finals जिसमें उन्होंने Hex को हराया 2-0 से. And then वो semis में आए Zodiac के against और Zodiac against you already saw what a fabulous match we saw. It came down to last match, last second pay. It was all about execution, about learning from the previous matches where they were defeated. So उन्होंने सीखा उस चीज को, उन्होंने देखा वो क्या गलती कर रहे थे, and they came back brilliantly. But right now finals बहुत ही exciting होने वाला है क्योंकि Lazy has also been dominating throughout this tournament. So we are seeing a gang coming in, but blue side was able to take out the Slayer. So Mortal, blue side ने फिर से बाजी मार ली in terms of objectives. Yes, Aizen, and can देख सकते हैं कि ब्लू साइड आज थोड़ा ज्यादा ही डोमिनेट करना चाह रहा है. उनको जल्दी है. दे आर लाइक भाई खत्म करो. उनको टीवी देखनी है. Yes, संडे नाइट शो. yes, that's true. Yes, that's true. But Alan did a smart thing right now. He went to the bot lane and was able to take out the bot lane mid tier turret. Yes. And so, Aizen, I just want to know, do you think any of the team, whether it's Lazy or Valhalla, is going to show us a Zuka gameplay? I hope so. I really hope so. मैं अभी पता है मैं like when I was talking about the semi-final, I just like I was about to say about Zuka. फिर मेरे को याद है अरे यार Zodiac तो है ही नहीं इस finals में. I think, Like, Aizen, you just missed what Thane did with Violet. वो Violet was like, मैं इधर वेट करूंगी, मैं किधर नहीं जा रही, ठीक है. एंड Thane अंदर आया, उसने उसको उठाया, बोला चलो दीदी घूम के आते. yes. And So Thane did a brilliant job in taking out the backline from Team Blue. So yes, will we be able to see Valhalla getting this match because they are doing pretty amazing right now, but they are quite low on health and they need to back out. Yes, they need yes, to back out. They cannot risk it anymore because they have done a brilliant job in pushing all the lanes. yes, Valhalla has made a significant comeback right now. That's what I want to say. And
Thane is just has a simple mindset is in his mind, and he's just like, आओ मैं तुम्हें कबूतर दिखाता हूँ. That's what he knows. Yes, that's very true. He whenever he finds someone alone in his reach, he just calls, shouts, and be like, "आ तुझे कबूतर दिखाता हूँ," and that's all Yes, he that's very wants. true. So Alan is going 1v2 right now at this point of time in the mid lane, and he got a lot of damage from Violet, and he's trying to back out, but will be taken out by Ruben with a great amount of burst damage coming in, because we know that this mage deals a lot of burst damage in mid game to mid game. So Ellen was taken down, but Thane did try to trade it out with one kill. Yes, Aizen, and Alan. I think Alan shouldn't have went in for that V1 in the this point of game, and it Yes, kind of proved to be a bad decision. He lost his. yes, that was a bad decision, because Infinite Slayer bus aane wala tha. It was about to spawn, and Ellen was also not, like, he was not capable enough to fight two people in this stage of the match, where he was not even able to protect their turret, and also he went down. So, which only would mean that probably Team Lazy will be able to take out the Infinite Slayer. But before that, we would probably be seeing a gank, and team instead, okay, this is a turn of tables. Instead, Team Red has like occupied all the sides of the Slayer pretty well, and trying to stop Team Blue to come in. They're forcing Team Blue to initiate and do some mistakes so that they can capitalize it and take probably one or two kills and then go for Slayer. So right now we see that there is a gang coming out in the mid lane near the jungle area. All of them has gone in with all their sets of skills, and okay, this will probably be the end of the match if they are able to take out the Infinite Slayer, and they also are forcing mid lane. They have I think retreated they are going from for the the turret. Slayer. They are just going to push Yes, right now. yes, they are at this point of time. They are going to push right now, because almost all the players are alive for Lazy, and I don't think Kriknak will be able to save the base turret, and I think this will probably be the second win for Team Lazy. Yes, I think it's going to be. Oh, and by team Lazy just came with 2-0 in this match. Yeah, so we were like, I was personally rooting for Valhalla to win this round, because it would have been a brilliant third match going in and 1-1. But as I said, Lazy, their name is Lazy, but they are not lazy. Trust me, guys, Yeah. they are not lazy. They are very active in the game. They see that one mistake, they capitalize, they come back, they throw you off your table, and they win matches. That's what they did right now. I mean, it's pretty amazing how they play, how they push turret and take that map advantage. Model, what do you have to say about Ruben? See what a Yeah. fantastic job he has done. Yes, Aizen, and as you say that they are just name is Lazy. Like वो नाम से काम छोड़ है, काम से काम छोड़ नहीं है. बात यही है. So Yes, that's that very thing true. I would say is like again, like I have been saying this even in the semis about Team Valhalla that Miriam has not been able to shine as much as I think he should, because Yes, that is he true. That has is true. because as a jungler of a team he has a lot of responsibilities, and I am not saying that because of his score. I know that opponent teams always target him in the first because they know that he is a brilliant player and he can change the tide of the game on his own. But even though I think he should have played a little more safely and shouldn't Yes. have been that much greedy, I think. Yes, that Yeah. is true. Kisame did try his best to save his team with the MVP coming from the losing side, but he was not able to. But जहाँ तक मेरे को लगता है कि Team Lazy is very, I mean, they are very good at micros and macros. So this is their like positive part that is allowing them to win flawlessly throughout this tournament. यस आई थिंक मुझे भी यही पर लगता है कि जो लेजी जो करता है वो है कि सिंपल सा है उनका लॉजिक कि उन्हें पता है कहाँ पे फाइट करना है, कहाँ पे क्या करना है, उन्हें उन्हें पता है कि हमें कहाँ पे एक जगह पे वेलकम किया जा रहा है तो हमें कितने देर वहां पे रहना है. उससे ज्यादा वो नहीं रहते. उन्हें पता है कि हमें एक लेन पे जाना है, फाइट करनी है, टरेट ले सकते हैं तो टरेट लेंगे,
नहीं तो हम जाके उनका जंगल छुड़ाएंगे. Lazy has a simple mindset. They have a complete vision of what they are going to do in a certain point of time. They don't do anything else. And Aizen, I think you know that as much as I say that they know कि भाई हमको इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हम ना चाहिए ना लेंगे ना वो देंगे. And that's the point where they don't. That's the reason they don't make mistakes as much as other teams. So Yes, that I think is it was a pretty true. good match. Yes, that is true. So, guys, this was a brilliant second match, and moving forward, the casters will change. So it will be goodbye from my end and Mortal. I would absolutely thank Mortal for helping us out in terms of casting throughout the semis and the finals as well, the first two matches. We are very thankful. Also, Team Xenon Esports is giving a huge shout out to Mortal who came in and saved us because we were looking for casters and was not able to find someone at this point of time as everyone was occupied, and Mortal came up and willingly helped us. So thank you so much, Mortal. And going forward, two other casters will be joining us in. So Bisho himself will be coming in and casting for you guys. So I hope you guys absolutely love the hard work that we are putting in for you guys. So go and like the stream, subscribe our channels. So Model, thank you so much. It was my pleasure, Aizen, and I had a wonderful experience casting with you. And I was able to just watch this such wonderful matches in the first hand. That's what I think was the best thing. And I know मेरा दिल बहुत बड़ा है, so say that. Okay. So Yes. So, guys, we will go for a pause for some time, and we will be back very soon with match three. So, both of the matches were won by Lazy. So, I hope that we will have more matches. Like we'll go for the best of seven, and maybe Valhalla will be able to come back. So, Mortal, चलो ब्रो चलते हैं. अब दूसरे लोग आते हैं, ज्वाइन करेंगे और देखते हैं अपन चलो मैच guys, एंजॉय करके पॉपकॉर्न के साथ. अब चलो guys, अगर मुझे मिस करोगे तो बुला लेना. Bye bye. ठीक है, guys. So, we are going on a break. We'll be joining you guys soon. Yeah, guys. Bye bye. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I
might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like,
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.
a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. क्या बोलती पब्लिक, इट्स योर बॉय राइनहार्ट फ्रॉम नवाबों के शहर लखनऊ से। सबसे पहले तो मैं जेनॉन स्पोर्ट्स के सभी क्रिएटर्स को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया आज कास्टिंग के लिए और इतनी मेहनत करी अपने टूर्नामेंट के लिए और सीओटी कम्युनिटी को और अच्छे से ग्रो करने के लिए। और मैं बीशू गेमिंग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने स्पॉन्सर किया इतना अच्छा टूर्नामेंट। सो गाइस, आप फेसबुक पे जाकर के मिस्टर गेमिंग बीशू गेमिंग को चेकआउट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा टूर्नामेंट की। दोस्तों, आज हो रहा है Xenoverse Clash Rivals का फाइनल मैच, जिसमें आमने सामने भिड़ रही हैं दो ऐसी टीम्स जिन्होंने एक से बढ़कर एक टीम को डिफीट किया है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं लिजी की, जिन्होंने पब जैसी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को डिफीट किया है और यहां आज फाइनल तक पहुंची हैं। लिजी के अगेंस्ट में कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, टीम वैलहाला है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम रही है। इन्होंने भी हैक्स जैसी टीम्स को डिफीट किया है। यहां आज फाइनल कर रहे हैं लिजी वर्सेस हमारी वैलहाना। गाइस, आज का मैच जो है वो बेस्ट ऑफ 7 का है, जिसमें से पहले मैचेस आप लोगों ने देखा कि 2 मैचेस लिजी ऑलरेडी जीत चुकी है। अभी वो लीड कर रहे हैं यहां पे, मगर देखते हैं कि आगे के मैचेस कैसे जाने वाले हैं। अभी मेरे साथ में कास्टिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे हमदम हीजो। वेलकम हीजो मेरे भाई। सो क्या लग रहा है आज कौन सी टीम्स यहां पे जीतने वाली है हीजो? दोनों टीम को चांसेस से देखते हैं क्या होगा। ऑलरेडी 2 गेम डोमिनेट कर चुके हैं लेजी, सो अभी कमबैक देखने को मिलेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। एक फुल स्ट्रेच मैच बेस्ट ऑफ 7 देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज यहां पे कहूंगा कि लिजी ने जिस तरीके से एक डोमिनेटिंग नेचर वैलहाला का खत्म कर दिया, जो वैलहाला का एक पूरे टूर्नामेंट में खौफ था कि ये टीम तो डिफीट ही नहीं हो रही यार, 3 मैच खेलती है तो तीनों के 3 जीत जाती है, वो लिजी ने यहां पे कहीं ना कहीं उसको डोमिनेट कर दिया है, जो 2 पहले मैचेस जीते हैं यहां पे। और अब मुझे लगता है ये एक एडवांटेज भी उनकी तरफ होता जा रहा है, जिस तरीके से वो अभी गेम्स को लेकर के जा रहे हैं, जो रोटेशंस वो इतने अच्छे अपने गेम्स में डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक लेजी तो पहले से भी लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम कहा जाता था और कोई बंदे बोलते वो फिलहाल बेस्ट टीम है इंडिया का। तो देखते हैं अगर लेजी अभी अपना पोजीशन होल्ड करती है या नहीं, कैसे, या वैलहाला अभी नया नंबर 1 बनेगा। देखते हैं गाइस, आज जीत के यहां से 10K प्राइस पूल है यहां पे Xenoverse Clash Royals का। आज मैं आपको बता दूं 5K मिलेगा जो भी पहली टीम यहां से जीत करके जाएगी। सेकंड विनर को यहां पे मिलेगा 2K प्राइजेस और थर्ड प्लेस के लिए भी Xenoverse ने यहां पे प्राइज मनी रखा है। 1K का प्राइज मनी है जो ऑलरेडी पब को मिल चुका है। जी हां, उनके मैचेस हुए थे, वो ऑलरेडी थर्ड प्लेस होल्ड कर चुके हैं यहां पे। और बाकी के जो आपके 2K बचते हैं, जो 2000 रुपए आपके बाद के बचते हैं, वो हमारे MVPs को दिए जाएंगे जो क्वार्टर फाइनल्स, जो सेमीफाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं यहां पे। अब मैं स्ट्रीमर से दरख्वास्त करूंगा कि आप मैच स्टार्ट कर दीजिए, बड़ा बेसब्री से इंतजार है हमें थर्ड मैच देखने का। ओके, सो यहां पे गेम हो चुका है स्टार्ट। वैलहाला को मिला है इस बार सबसे पहला पिक। 1v के हाथ में यहां पे आया है बैन, अपोनेंट में उनके खेल रहे हैं यहां पे टीम लिजी। तो हीजो, आपको क्या लगता है पहला बैन क्या आने वाला है वैलहाला की तरफ से? अगर मेटा बैंड पूछा जाए तो या तो अपने को हायाटे देखने को मिल सकता है, या तो यूवी देखने को मिल सकता है, या तो टारगेट बैन बोले तो ओके, एज आई सेड इट्स यूवी आया यहाँ पे। मेटा हीरोज करेंगे, कंफर्ट हीरोज के ऊपर भी ये लोग नहीं जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उन हीरोज को बैन करेंगे जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं अर्ली, मिड और लेट गेम के अंदर, जो कि यू करती है। अब हम चलते हैं रोनिन जीएल की तरफ में। ये भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो हमारे आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। हीजो, आपको क्या कहना है, टीम आपके लीसी की तरफ से क्या हमें बैन देखने को मिल सकता है? 10 सेकंड हयात, बिल्कुल सही आपने गेस किया था कि जो मेटा बैन्स हैं वो हमें दोनों टीम्स की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और पहले जो बैन्स किए गए हैं वो मेटा हीरोज ही किए गए हैं। जानी के हाथ में यहाँ पे बैन आया है, और आपका मेरा गेस सही है तो ग्रैक यहाँ पे बैन हो सकता है, टूलेन हो सकता है, और लंबर भी मैंने देखा है आजकल ये लोग बैन कर रहे हैं। सो टूलेन बैन किया है यहाँ पे। अगला गेस जो आप बताइएगा, रेड टीम क्या करेगी? मेरे हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से रेड टीम शायद अभी ओमेन बैन करेगी या तो टारगेट बैन करेगी वन ऑफ द प्लेयर को। मे बी 1v को टारगेट बैन कर सकते हैं टैंक के लिए।
हाँ, वन भी बहुत अच्छा टैंक सपोर्ट खेलते हैं अपनी टीम के लिए। और जिस तरीके से उनकी सिनर्जी है मिरियम के साथ में, सॉरी किसामे के साथ में, जिस तरीके की उनकी सिनर्जी है अपने एमएम प्लेयर्स के साथ में, वो एक बहुत अच्छा आउटप्ले दिखाते हैं अपनी टीम के साथ में। और लविल को बैन किया है, आपने एकदम सही कहा, टारगेट बैन करेंगे, रेस्पेक्टेड बैन किया यहाँ पे। किसामे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं जो लविल को खेलते हैं, और यहाँ पे बैन हमें देखने को मिला। और इंस्टा लॉक किया है यहाँ पे लंबर बिना समय गंवाए वन भी ने। हीजो, क्या लगता है पहले 2 पिक्स अब क्या ले सकते हैं, क्योंकि लंबर तो ऑलरेडी लिजी ने उठा लिया यहाँ पे, सॉरी वैलहाना ने उठा लिया यहाँ पे। मेरे हिसाब से शायद ये लोग लिली जा सकते हैं, पहला पिक लिली, और मे बी एमएम को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि एमएम को टारगेट किया जा रहा है। ऑलरेडी एमएम 2 बैन हो चुके हैं, तो मेज और एमएम जा सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, मेज और एमएम भी जा सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे किसामे और वनबी को जोड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मेन हीरोज को बैन मार रहे हैं कि थर्ड गेम है, ये वाला भी इनको नहीं जीतने देते हैं, और हमारी बढ़त बन जाएगी मैच के अंदर पे। अगर इनके पिक्स के ऊपर अगर मैं भी अपना ओपिनियन यहाँ पे रखूं, तो मीना जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है उसको लिया। और लिलियाना, बिल्कुल सही गेस किया ही जो आपने यहाँ पे कि लिलियाना को लॉक करेंगे। इनके काउंटर्स क्या उठा सकते हैं जो यहाँ पे, अगर स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम बात करें तो? एक फिलहाल अभी काउंटर्स बोल नहीं सकते, क्योंकि मीना को डीएस पे भी खेला जा सकता है और सपोर्ट एज अ सपोर्ट भी खेला जा सकता है। और लिली का काउंटर है लाइक हाई बर्स्ट और पोक डैमेज, क्योंकि उस पे मोबिलिटी है, अगर बर्स्ट नहीं कर पाओगे तो वो भग जाएगी। सो क्रिक्सी इज वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं। लोरियल तो लेट गेम होगा, तो देखते हैं इनका अगर कुछ कॉम्पोजिशन बना है टीम का, लाइक इनका कुछ स्ट्रैटेजी रहेगा, लाइक ये कॉम्प उठा के मारेंगे, तो अगर कॉम्प वाइज गए तो वो अपना कंफर्ट पिक जाएंगे। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं एक तरीके से वॉम्बो कॉम्बो जैसे आपके लंबर के साथ में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्रिक्सी को लॉक कर दिया है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक जा सकता है, क्योंकि क्रिक्सी भी ठीक से रोटेट कर लेती है और अर्ली गेम से भी वो भी डैमेज निकालती है, जैसे लिलियाना अपने फर्स्ट स्किल से निकालती है यहाँ पे। सो दोनों ही मेज अच्छे हैं। और कैफनी को इंस्टा लॉक मारा यहाँ पे। मैं बता दूं किस्सा में भी बहुत अच्छी कैफनी खेलते हैं। क्या लगता है आपको, क्या एक आउटस्टैंडिंग हमें जोड़ी यहाँ देखने को मिलेगी टीम वैलहाला की तरफ से, वन बी और हमारे किस्सा में की? लाइक कैफनी इज अ गुड एमएम, बट अब पिकिंग अगेंस्ट मीना इज बैड पिक बोलूंगा मैं, क्योंकि मीना का स्टैक्स उसको बार बार मिलते जाएंगे। एक वो लेवी है और एक जो कैफनी है, जो मीना की स्टैक्स उसको बार बार लाते, वो कांस्टेंट हील होती रहती है अपने पैसिव और उसकी वजह से। यस, तो देखते हैं कैफनी अभी कैसे खेला जाएगा। आई होप कैफनी नॉर्मल अटैक मीना को ना टारगेट करे अर्ली गेम और लाइक अर्ली स्टेजेस ऑफ फाइट। ओ, यहाँ पे एट्रो ने वेरस को लॉक कर दिया है, थर्ड बैन उनके हाथ में आया है। अगर उनके अपोनेंट्स की मैं बात करूं तो कोई भी जंगलर और साइड लेनर नहीं लिया है अपने। मैं ऑलरेडी बताऊं, इनके इनिशिएट तो अच्छा हो गया, क्योंकि इनके पास में मीना आ गई है, इनके पास में वेरस आ गई है, और अपोनेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके थेन जैसे टैंक हीरोज करेंगे, तो ये शायद किसी जंगलर्स को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। ही जो आपको क्या लगता है? यस, बिल्कुल जंगल को टारगेट किया जाएगा। ओके, साइड लेनर यहाँ पे एलन को किया है। ओके, सो यहाँ पे फिर से हमारे रेंजर भाई के पास में आया है बैंड वैल। हालांकि यहाँ पे काफी स्ट्रेटेजी से भी काम ले रही है, हालांकि वो कंफर्ट पिक जा रहे हैं। अपोनेंट की अगर मैं उनके बात करूं तो मीना मुझे लगता है यहाँ पे शायद अभी भी डीएस लेन या फिर टैंक के बीच में वो अभी पिक नहीं किए हैं, वो किसी को भी कर सकते हैं यहाँ पे। और बैन की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को स्कुशी हो रहे हैं, तो जो बस डैमेज वाले हीरो हैं जैसे ओमेन को भी साइड लेन बैन कर दिया। ओ भाई ये टीम्स अपने डीएस लेनर को भी काफी स्ट्रांग रखना चाहती हैं, तो साइड लेन्स के हीरोज को भी बहुत अच्छे से बैन कर रहे हैं, जो मेटा में बहुत अच्छे चल रहे हैं जो। हाँ, बट ओमेन बैन वाज बैड, क्योंकि मीना भी पिक हो चुकी थी, वेरस भी पिक हो चुकी। मेरे हिसाब से वेरस डीएस जाएगी होपफुली। सो ओमेन के अलावा इनको जंगल को टारगेट करना चाहिए था, या तो लाइक एमएम को टारगेट करना। जैसा मैं बोल रहा था कि कोई जैसा मैं बोल रहा था कि कोई बस्ट हीरो डैमेज वाला हीरो ये बैन करते, क्योंकि खुशी है क्रिक्सी और कैफनी तो मिड टू लेट गेम में बहुत जल्दी मर जाएंगे यहाँ पे। यस, बिल्कुल। इनको अगर एमएम को बैन करते ना तो एमएम को आउट ड्राफ्ट हो जाता, क्योंकि इनका एमएम पिक है और ऑलरेडी 2 एमएम बैन है। सो 24 के प्योर मैन ने यहाँ पे रॉक्सी को बैन किया, जो कि एक सपोर्ट हीरो है, और मुझे लगता है शायद मीना को अच्छे से काउंटर कर सकती थी रॉक्सी, यहाँ पे इसीलिए बैन किया है। आपको क्या लगता है ही जो इनका नेक्स्ट बैन भी आ रहा है चौथा, बताइए ही जो। ये लोग सीधा लाइक डीएस लेन को फोकस बैन कर रहे हैं। डीएस का भी पिक्स बहुत बैन और पिक हो चुके हैं, लाइक ओमेन, एलेन, रॉक्सी, मीना, वेरस सब पिक हो चुका है। सो डीएस लेन पे बच्चे कुछ जो है वही खेलना पड़ेगा, लाइक आउट ऑफ मेटा हीरोज बोल सकते हैं।
और यहाँ पे टेलनास बैन होते हुए हमें दिख रही है। और मैं आपको बता दूं 24K प्योर मैन अभी दिखा रहे थे वुकोंग, ये बहुत ही अच्छा वुकोंग खेलते हैं। कुछ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं काफी अच्छा वुकोंग खेलते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एस्ट्रिड लॉक करी क्योंकि इन्हें पता है कि लंबर का भी सीसी है, क्रिक्सी का भी सीसी, और अपने अल्ट से मैं इम्यून होकर के अंदर घुस के मार सकता हूं यहाँ पे। तो एस्ट्रिड लॉक करिए। अब 2 पिक्स बचते हैं हमारी वैलहाला टीम के पास में। हिजो, क्या लगता है आपको? 2 पिक्स बचे हैं, क्या क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाइज जा सकते हैं? क्योंकि अगेंस्ट में मीना है, वेरस और एस्ट्रिड हो गई है। इनका डीएस का कुछ बोल नहीं सकते, पर जंगल पे शायद मेरे हिसाब से जिल आएगा या तो स्कड आएगा। स्कल या तो इस फ्रिगेट। हाँ, इन्हें कुछ टैंकी तो लेना पड़ेगा क्योंकि फिर टीम बहुत ज्यादा स्क्विशी हो जाएगी, और ऑलरेडी अपोनेंट की टीम के पास में इनिशिएशन अच्छा है, उनके पास में टैंकीनेस भी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, वही बोल रहा है, इनको टैंक चाहिए ही चाहिए। ओ हो, यहाँ पे लूबू साइड लेन पे शायद खेलेंगे, और लिंडिस को यहाँ पे ओहो लास्ट में चेंज कर दिया और नेक्रोथ ले लिया। यहाँ पे नेक्रोथ जंगल होगा और लूबू हमें साइड लेन में देखने को मिलेगा। अब आई थिंक लूबू अच्छे से रोटेट भी कर सकता है, वायरस के अगेंस्ट में अर्ली टू लेट गेम खेल भी सकता है, इतनी जल्दी वो मरेगा नहीं। सो लास्ट पिक आया है, एमएम अभी तक नहीं पिक किया है टीम लिजी ने। क्या लगता है जो आपको स्पाइक क्या खेलेंगे यहाँ पे? एक्ट्रो खेलेगा एमएम मोस्टली, और शायद वायलेट या तो ब्रुनिल्डा बहुत अच्छा पिक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इनका जो लाइक सस्टेन तो इनका बहुत ज्यादा है। सस्टेन भी है, डैमेज भी है। लेट गेम लिलियाना एक हीरो को खा जाएगी। स्क्विशी बहुत है क्योंकि यहाँ पे वैलोना ने स्क्विशी बहुत लिया है यहाँ हीरो को, और लूबू भी अच्छा खासा सीसी हो जाएगा मीना से, और आपके दूसरे हीरो जैसे लिलियाना का फर्स्ट स्किल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देता है, बेरस का सेकंड देता है, थोड़ा बहुत सीसी मिलेगा, और एंटी लाइफ स्टील वगैरह बनाएंगे तो दिक्कत तो होने वाली है। देखते क्या होता। स्पाइक सारे ही एमएम को दिखा दिए, शायद पूछ रहे हैं भैया एट्रो बताओ कौन सा एमएम पिक करूं यहाँ पे यार। तो फाइनली वायलेट यहाँ पे लॉक किया है हमारे स्पाइक ने, और शायद एट्रो ने कहा होगा भाई ले वायलेट ही खेलते हैं। सो गाइस, तुम लोग यहाँ पे अपनी चैट में मुझे जल्दी से बताओ पिक्स वाइज तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम यहाँ से डोमिनेट करने वाली है। मैं अपने हीजो भाई से तब तक डिस्कस करता हूँ एक स्ट्रैटेजी क्या यहाँ पे आ सकती है। जैसे अभी तक जो ड्राफ्टिंग है वो मुझे ज्यादा अच्छी लिजी की लग रही है, हीजो उतनी अच्छी मुझे वैलहाला की नहीं लग रही है। हालांकि जैसे इनके पास में काउंटर्ड जो ये हो गए हैं, मीना एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पे खेलने वाली है। हीजो, आपकी क्या राय है यहाँ पे दोनों की ड्राफ्टिंग को देखते हुए? मेरे को लाइक बिल्कुल लगता है कि लेजी का ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गया है, क्योंकि लाइक उनका वॉम्बो कॉम्बो है और एक हीरो को बस्ट करने का है। लाइक वेरस को देगी, लिलियाना एस्पालेक्टो और वायलेट रोल करके मारेगी, एक हीरो इंस्टेंट बस्ट होगा। वो लंबर को छोड़ के चारों में से कोई भी बस्ट हो सकता है, इवन लूबू कैन बी। सो अगर मीना ने गलती से हुक किया, चार्म किया, तो वो बंदा मतलब डेड है, समझ लो। अगर क्लेंजिंग वेरस के लिए यूज किया तो मीना प्रॉब्लम करेगी, अगर मीना के लिए भी यूज किया तो वेरस प्रॉब्लम करेगी। और मुझे लगता है कि वैलहाला के पास चांस तब है अगर ये अर्ली टू मिड में इस गेम को जल्दी से खत्म कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं रोटेशन थोड़ा सा अच्छा है इनके पास में, अर्ली गेम भी थोड़ा सा ठीक है इनके पास में। अगर जाकर के ज्यादातर आपके बफ्स इन्वेड वगैरह करेंगे और नेक्रोथ को अच्छे से फार्म मिल गया तो अर्ली टू मिड गेम खत्म करने का तो पूरा चांस बन सकता है। बट गेम जितना ही लेट जाएगा, लिजी उतनी ज्यादा डोमिनेट करने लगेगी। हाँ, हो सकता है। अगर नेक्रोथ बढ़िया खेल गया और उसने लाइक लिली या तो और वाया को टारगेट करके निकाल दिया टीम फाइट में, तो इनको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कैफनी को मारने वाला मुश्किल रहेगा फिर। सही बात बोल रहे हैं। ओके, पहला पॉज यहाँ पे मिल रहा है। शायद हमारे कोई भाई यहाँ पे बंधु अभी शायद लैग कर रहे होंगे, मे बी शायद इसलिए रिकनेक्टिंग हो रही। तो दोस्तों कहीं जाना नहीं, हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी की बात करते हैं यहाँ पे, लाइक हम आइटम्स की थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। हम अपने हीजो भाई से पूछते हैं मीना के अगेंस्ट में एक एमएम प्लेयर को या आपके एंटी लाइफ स्टील प्लेयर को किसको बनाना चाहिए? लाइक मेज को बनाना चाहिए या किसी सिचुएशन में एमएम को भी बना लेना चाहिए एंटी लाइफ स्टील? हमेशा मेज को बनाना चाहिए एंटी हील, या तो और एक जरूरत पड़ी तो डीएस लेनर बनेगा, क्योंकि एमएम पे एंटी हील बनाओगे तो उसका डैमेज आउटपुट नहीं आएगा। ऑलरेडी एमएम को लेट गेम तक जाना पड़ता है, उसमें भी अगर कर्स ऑफ डेथ अर्ली बनाएंगे तो दिक्कत देगी। बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रो टिप्स वगैरह भी दे रहे हैं साथ में कि एंटी लाइफ स्टील कभी एमएम पे मत बनाओ। 2 बंदे जो बनाते हैं वो हैं आपके मिड लेनर जो मेज खेलता है, और डीएस लेनर जो आपका साइड लेन पे डीएस को संभालता है बैठ करके, उनके ऊपर बनते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लूबू बना सकता है, यहाँ पे मेज में हमारी क्रिक्सी बना सकती है यहाँ पे।
सो गेम रिज्यूम देखते हैं करते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे को तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखते हैं गाइस यहाँ पे रिज्यूम होता है नहीं, तब तक और थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे टीम्स हमारी यहाँ पे 2 मैचेस जीत चुकी है ऑलरेडी लिजी। थर्ड मैच की ड्राफ्टिंग भी लिजी की काफी अच्छी है। क्या वैल हाला एक नई स्ट्रेटेजी सोच रही है? अक्सर मैंने देखा है कि वैल हाला अभी के जो गेम्स खेल रही है ना ये जो, वो थोड़ा सा चांस देते हैं, सामने वाली की स्ट्रेटेजी को भी समझते हैं। मे बी शायद वो यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि बेस्ट ऑफ 7 का मैच है और लास्ट मैचेस एकदम ट्राई हार्ड करें जा करके। उनका मैंने एक गेम देखा जिसमें 1v10 थे, वहां पे थोड़ा सिनर्जी लैक हो रहा था उनका। अगर वो सिनर्जी काफी बैठ जाता तो वो गेम इनके हाथ में था। इन्होंने टवर के अंदर मीना को लाया इंस्टेड ऑफ एमएम को लाने का, लाइक फ्लिकर करके। इट वाज नॉट लाइक, चाहिए ही नहीं था, वो जरूरत था ही नहीं। अगर होल्ड भी कर लेती तो भी हो जाता। तो मीना आके 2 बंदों को अल्ट मारी तो उनके टावर डे मार के 3 बंदों को खा लिया था। तो ये गलती दोबारा ना रिपीट करे बस। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिनर्जी और कम्युनिकेशन का हमको दिख रहा है। बाकी ड्राफ्टिंग में उतना ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि कंफर्ट पिक्स आप जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस से आप खेलते हो गेम पे। ओके, सो गेम यहाँ पे होने जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट। ओके, क्रिक्सी और लंबर जा रहे हैं मिड की तरफ में। बॉटम में वायलेट खेलेंगी कैफनी के अगेंस्ट में। लूबू अपने जंगलर को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी, और लंबर उनके यहाँ पे इन्वेट को रोकने आए हैं, प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे नेक्रोथ का बाफ। सबसे पहले एस्ट्रिड भी इस बार ब्लू स्टार्ट करिए, तो एस्ट्रिड का जो रोटेशन होगा वो टॉप लेन की तरफ होगा और हमारे नेक्रोथ को बॉट लेन की तरफ होगा। सो पहला किल मुझे लगता है कि शायद चांसेस यहां पे वैल हाला के हो सकते हैं। बट अगर रोटेशन की मैं बात करूं तो लिलियाना डिफेंड करने आ सकती है। नोटोरियस, आपको क्या लगता है किसका पहला खून गिर सकता है यहाँ पे? मोस्टली लेजी विल गेट फर्स्ट ब्लड, क्योंकि ये लोग अबेजल से पहले फाइट करते इसलिए। अगर कर रहे तो मिनिमम लाइक एडवांटेज लेके खेलेंगे, लाइक मैन एडवांटेज 3 वर्सेस 2 या 1 वर्सेस 2 ऐसे। सो चलिए देखते हैं गाइस, हम लोग बेट करते हैं, 10-10 रुपए की शर्त लगाते हैं। मैंने कहा है कि सबसे पहले वैल हाला करेगी और हीजो भाई हमारे बोल रहे हैं कि लिसी गिराएगी सबसे पहले। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है यहाँ पे। चलिए एक बार थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीजों की। जैसे हम देख सकते हैं कि लिलियाना का रोटेशन आ गया अर्ली, जो कि बहुत सही है, और क्रिक्सी भी आ गई यहाँ पे। नेक्रोथ ने पूरा फार्म ले लिया है, लेकिन विजन मिल गया है अपोनेंट को। और वैरस कितनी अर्ली गेम में ही मिड लेन आ गई है यहाँ पे, उसने इतनी जल्दी फार्म खत्म कर दिया। और उसके साथ साथ लूबू भी आया, तो लाइक रोटेशन इनका बहुत सही चल रहा है। लाइक दोनों टीम को अच्छे तरीके से जानते हैं दोनों। अब देखिए यहाँ पे घास में पूरा विजन ले रहे हैं लंबर। यहाँ पे 15 सेकंड में इनका ड्रैगन स्पॉन होने वाला है। मुझे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे एक फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि ऊपर से वायरस भी रोटेट कर रही है, एस्ट्रिड भी आ रही है, लेकिन लूबू टॉप में बैठा है। 4v5 और यहाँ पे फर्स्ट मैच स्टार्ट हो सकता था। पहला खून मिलते मिलते रह गया। रोनिन ने फ्लिकर मारा, यहाँ पे पीछे भागे लेकिन बैकअप आ गया। यहाँ पे फर्स्ट ब्लड निकाला है। यहाँ पे हमारी वायलेट ने एकदम सही बोला, लिजी निकाल करके गई यहाँ पे फर्स्ट ब्लड। दूसरा खून भी लिलियाना ने यहाँ पे कैफिनी का कर दिया है। तो एकदम सही बोले, 10 रुपए तो मैं हार गया यहाँ पे, मगर कोई बात नहीं। जो एक रोटेशन था वो बहुत अच्छा आया। जैसे मैंने बताया था कि लूबू टॉप में था और दोनों के दोनों प्लेयर्स आ गए। यहाँ पे ड्रैगन भी निकाल करके ले गए और 2 किल भी कर दिए नोटोरियस। यस बिल्कुल, मैं बोला ना लेजी का जो है वो एडवांटेज के बिना लड़ते ही नहीं है। बिना एडवांटेज आप देख ही नहीं सकते लेजी टीम फाइट्स लेगी। अच्छा, ये एक गलती फिर से हो रही है कि टारगेट किया मीना को, स्पेल्स और एबिलिटीज यूज किए मीना के ऊपर। सो फाइट में तो ऑलरेडी डिसएडवांटेज पे आ गए और रोटेशन आ गया ऊपर से लीजी का, किल्स भी गए और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी गंवाना पड़ा। Yes, ओ exactly. मगर बहुत बढ़िया रिकवरी करी यहाँ पे। नेक्रोथ ने डीएस को निकाल लिया है, लाइक पूरा पूरा डिसएडवांटेज नहीं हुआ यहाँ पे। सो वैल हाला बहुत सही अभी इस टाइम रोटेशन कर रही है, इवन दो उन्होंने 2 किल्स यहाँ पे गंवा दिए। तो हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं, हीजो भाई हमारे बताएंगे कि जब अर्ली गेम होती है तो क्या चीज ज्यादा जरूरी होती है? डीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर आपका एबिसिल ड्रैगन होता है जो स्पॉन होता है अर्ली गेम का? तो लाइक बिफोर 8 मिनट्स हमेशा फोकस करो कि अबेजल मिले। If at all, if you have late game, then you can focus DS. But I'll say that अबेजल को फोकस करें हमेशा। तो गाइस आपको प्रो टिप्स भी मिल रही हैं यहाँ पे। मैंने जैसा कि आपको बताया, एबिसिल को आपको ज्यादातर टारगेट करना है, बट अगर आप मिस कर देते हो, आप अर्ली गेम पे नहीं ले जाते हो, तो आपको डीएस निकाल लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा ही। कुछ गोल्ड एडवांटेज, कुछ छोटा मोटा बफ आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि नेक्रोथ ने बहुत सही डिसीजन लिया। उनके किल्स गिरे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से रोटेट किया और उसके बाद में यहाँ पे डीएस को भी निकाला है।
शायद अभी इनका प्लेयर लैग हो रहा है लग रहा है ब्लू टीम का। हाँ, ये बार बार यहाँ पे पॉज की रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है 1v जो कि हैं वो अपनी टीम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैलहाला में से कोई एक प्लेयर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, तो इस चीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अपने हमारे जो ये जेनोवर्स के क्रिएटर्स हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारा, इस पे कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। तब तक हम लोग भी थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे कि अर्ली गेम का जो हमने जैसा सोचा था कि मिड का एडवांटेज अर्ली टू मिड में मिल सकता था, यहाँ पे वैलहाला का वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रॉपर रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है टीम लीजी की तरफ से। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ है, देखते हैं क्या Okay. होगा। रिज्यूम हो गया यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कि वायलेट ने यहाँ पे रेड बफ ऑलरेडी चुरा लिया। नेक्रोथ का रेड बफ तो गया, अब उनको जंगल में यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पे मिड लाइन में देख सकते हैं कि ली भाई हमारी मीना 1v3 कर रही, अभी तक सरवाइव है, लेकिन फाइनली किल गया यहाँ पे। भाई वन मैन आर्मी बन गई थी, अकेले 3 बंदों को इंस्टॉल करके रखा था यहाँ पे। यस बिल्कुल, पर लेकिन इन्होंने अच्छा ट्रेड किया, लेकिन रेड गया तो गया, एटलीस्ट किल मिला। रेड गया तो गया, अब नेक्रोथ को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एस्ट्रिड कैंप करके बैठी है रिवर में और पीछे से आ रही है, और उस चीज को समझते हैं जानी यहाँ पे, तभी वो रिवर से नहीं अपने बफ की तरफ से आ रहे हैं रोटेट करते हुए वॉट को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा एंगेज किया, हल्की फुल्की पोकिंग है, लेकिन फाइट नहीं लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे लूबू आ चुके हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा फाइट शायद देखने को मिलेगी। 5v5 है, कैफनी भी बॉटम लेन में। एक बार मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा हम लोगों की फार्म और बिल्ड्स वगैरह भी स्ट्रीमर यहाँ पे दिखा दे। बॉटम में कीसामे के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज दिया है और घेर रहे हैं यहाँ पे, और कीसामे ने सीधे यहाँ पे स्प्रिंट लगाया और भाग गए हैं। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर हम यहाँ उनके फार्म की बात करते हैं, सो एमएम का फार्म वायलेट का 2.5 के की गोल्ड लीड है उनके पास में। हमारे कैफनी के पास में सिर्फ अभी 1.9 के का, ये तो थोड़ा गोल्ड लीड में तो पीछे चल रहा है यहाँ पे। और एक टावर भी लिजी को यहाँ मिल गया है। 2-2 का स्कोर है, मगर बढ़त धीरे धीरे बना रही है यहाँ पे लिजी गोल्ड लीड में। हाँ, पर इनका रोटेशन आपने नोटिस किया क्या? इन्होंने मिड पे पोक किया और कैफी को भी पोक किया बॉटम पे बिफोर मिनियंस, फिर जोन करके उनको लिटरली टावर से बाहर निकाल दिया ताकि उनको टावर इजीली मिले। यस, टावर इजीली करके। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, वैलहाला ने टॉप का टावर निकाल लिया, तो अभी तो ट्रेड इक्वल हो गई है यहाँ पे, क्योंकि 2-2 का किल भी है और एक टावर के बदले एक टावर आ गया। और मुझे लगता है लेन्स यहाँ पे शायद स्विच भी हो सकती हैं। यस बिल्कुल, इनको लेन स्वैप करना है, दोनों लेनर्स को लेन स्वैप करना है। सो अच्छा पोक कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिलियाना का किल का देखने को मिलेगा। नेक्रोथ ओपी खेल गया यहाँ पे। मिरियम भाई वन ऑफ द बेस्ट जंगलर बोले जाते हैं, और अपनी टीम के लिए इन्होंने किल निकाला है यहाँ पे। 24 पे के प्योर मैन थोड़ा गुस्साए बैठे, उनका कनेक्ट नहीं हुआ। अगर कनेक्ट हो जाता, और कनेक्ट हो गया यहाँ पे। बहुत अच्छा टारगेट पकड़ा है और यूज करा हुआ, यहाँ पे बच करके भाग जाएंगे क्या? लो एचपी पे थे और किल निकाल दिया कैफिनी ने यहाँ पे, लेकिन हमारी एस्ट्रिड ने उन्हें किल दे दिया। यहाँ पे डबल किल निकल रहा है यहाँ पे टीम के लिए। क्रिक्सी ने निकाल लिया गेम, और मुझे लगता है ये पूरी फाइट जा रही है हमारी टीम वैलहाला के फेवर में। पूरी की पूरी लिटरली टीम खत्म कर दी थी यहाँ पे। 2 बंदे बचे हैं यहाँ पे टीम लीजी की, तो आप यहाँ पे अब क्या बोलेंगे? क्या एक कमबैक था यहाँ पे? किस तरीके से इन्होंने उलझा के रखा? और रे भाई साहब, बहुत लेट में भी नेक्रोथ ने किल कितने कम एचपी पे निकाला है, आप देखिए ही जो। बिल्कुल, इनका सिनर्जी अभी अच्छा हो गया। 2 गेम हारने के बाद इनको पता चल रहा है कि गलतियां कहाँ हो रही है और कहाँ चुक रही है। आपने अगर नोटिस किया तो जब मिड में फाइट हुआ ना, तो लूबू ने बॉटम में एंगेज करके 2 बंदों को होल्ड करके रखा था, वायलेट और मीना को। सो दैट मीना फाइट में जा नहीं पाई, तो उनको फ्रंट लाइन नहीं मिला, इसकी वजह से उनको टीम फाइट में थोड़ा दिक्कत हुआ। अपने लिए बफ स्टील कर लिया हमारे जानी भैया ने, उन अपोनेंट को नहीं दिया। फर्स्ट स्किल मारी और यहाँ पे नहीं, मुझे लगता है लिलियाना ले गई यहाँ पे। मुझे लगता है जानी ने यहाँ पे अपोनेंट के जंगलर को मारा है, इसलिए उनके पास में बफ है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो रूबिन भाई साहब हैं, ये ले गए हैं स्टील करके। लिलियाना खेल रहे हैं ये बिल्कुल, लिलियाना ले गए था वहां पे। और आपको मैं बताऊं एक बात, लिलियाना को अभी जो लिलियाना बेस्ट बोलेगा ना सर्वर पे, तो मैं वो बोलूंगा कि रूबिन है वन ऑफ द बेस्ट लिलियाना खेलेगा वो अब सर्वर पे। अच्छा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रूबिन की। अगर काफी अच्छा पोक दिया, तुरंत फॉर्म चेंज करिए, यहाँ पे अंदर आ गए और काफी ज्यादा डैमेज दिया था। लूबू को फ्लिकर मार करके मारने की कोशिश करी। पता नहीं क्यों मीना से इतना ज्यादा लगाव हो रखा है हमारी वैलहाला टीम को, पीछे पड़ जाती है मीना के। लो एचपी है, हालांकि किसामे ने अच्छा डैमेज दिया। ओ भाई साहब, वायलेट का अल्टी और फर्स्ट किल, और यहाँ पे क्रिक्सी खत्म मिड लेन पे।
बिल्कुल, मैंने यही बस का बोला था, लिलियाना का S1 S2 और वायलेट का S1, और अगर बच भी गया तो वेरस का अल्ट। बॉटम लेन के टावर में बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। 24 के जो है बहुत ही अच्छा अपनी टीम के लिए रोटेट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल फोकस करके रखते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तुरंत टरेट को पुश कर देते हैं। हाँ, इनको लोगों को थोड़ा अभी सेफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये 1v2 1v3 या 1v1 मरे जा रहे हैं बॉटम पे, तो थोड़ा गोल डिफरेंस इसकी वजह से बढ़ रहा है लेजी का। ओ फिर से ब्लू की तरफ रूबिन और रोनिन यहां पे आ रहे हैं, क्या लेने देंगे यहां पे हमारी टीम वैल हाला, या फिर लेकर के चले जाएंगे यहां पे ब्लू पर फिर से लिजी वाले। अरे ब्लू बब बचा लो रे देवा, नहीं बचा पाएंगे यहाँ पे। फिर से इस बार वायलेट को मिल गया है और हम देख सकते हैं मिड लेन पे फाइट चल रही है यहाँ पे लो एचपी में, लेकिन एस्ट्रिड ने अट लगा करके इम्यून कर लिया। थोड़ा ज्यादा अंदर घुस गई थी कैप्टन यहाँ पे और पनिश भी किया वायरस ने उनको। बिल्कुल लो एचपी में जानी भाग रहे हैं, क्रिक्सी भाग, अर्जुन भाग वरना मरेगी। अल्ट मारा वायरस ने यहाँ पे, उनको भी डाउन करता। ये थोड़ा अग्रेसिव फाइट हो गई थी किसामे की तरफ से, अंदर टावर घुस गए थे मारने के लिए। हाँ, लेकिन वेरस का S2 ने उसको अंदर टावर भेज दिया। ओ नाइस भाई, मिरियम ओपी खेल रहा है अपनी टीम के लिए। तीसरा किल भी बहुत बेहतरीन निकाला यहाँ पे लो एचपी में। क्या नाइस रोनिन को फेंका यहाँ पे हमारे बनवी ने, और फिर से नेकरॉथ ने किल निकाला यहाँ पे। सो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने के साथ साथ इनकी स्ट्रैटेजी भी काम करी। और बॉटम लेन में चलते हैं, थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लूबू मार खा रहे हैं। अगर मैं इनकी बिल्ड की बात करूं तो इन्होंने सोल डिटेनर बना लिया है, साथ में इन्होंने दूसरे आइटम्स भी बनाए हैं। फार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो 4.8 के का इनके पास में गोल्ड है, वायरस के पास में 5.3 के का है, तो लीड तो बनाए हुए हैं इस टाइम पे लिजी। लेकिन ओ भाई साहब, ब्लड बात हो गया यहाँ पे टॉप लेन पे, और पक्का ये डीएस तो लेकर के जाने वाली है वैलाला। बॉटम पे एक फाइट देखने को मिल रहा है, लोबो और वेरस चल रहा है बॉटम पे। ओ 1v1 चल रहा है यहाँ पे, लो एचपी है, मार का भरोसा रेंजर भाई मार करके ले गए, और इन्फिनिटिव स्लियर भी निकाल करके वैलहाला ले गए। ये कमबैक हमें देखने को मिल रहा है, नाइस हुक किया यहाँ पे। ओके मिरियम पीछे से जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत उन्होंने, मैं एक बात तो कहूंगा, अगर लिलियाना अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा रोटेट कर रही है तो साथ साथ मिरियम भी बहुत अच्छा अपनी टीम के लिए रोटेट कर रहे हैं। बॉटम पे वायलेट पे लोबो कूदा है और लो एचपी है, अंडर टावर फ्लिकर यूज किया और सोलो ही किल मार दे। यहाँ पे अगर बच के जाते तो लिलियाना जाने नहीं देती। बहुत प्यारा रोटेशन किया यहाँ पे रूबिन ने, अंडर टावर यहाँ पे निकाल दिया। मिड का टावर तो मुझे लगता है यहाँ पे चला जाएगा। बहुत ही अच्छा सेकंड स्किल यूज किया, अल्ट भी यूज किया, लेकिन भाई दोबारा रिकवरी कर ली। एस्ट्रिड ने अल्टी मारा है, कोई फायदा नहीं हुआ। टीम टाइम पे बैक करी, मिरियम ने बहुत अच्छा यहाँ पे पोक दिया था, लंबर ने किल सिक्योर किया, टावर भी मिड का डाउन हो चुका है। यहाँ पे वायरस लो एचपी थी, डोमिनेटिंग पे भाई चला गया है नेकरॉथ। ओ भाई साहब 604 है भाई, 604 है, 10 किल है यहाँ पे समझ लो नेकरॉथ के। हाँ बिल्कुल, नेक्रोथ एक नंबर खेल रहा है। पहले जाना जाता कि मरियम वन ऑफ द बेस्ट जंगलर था, बट ड्यू टू हिज एग्जाम्स एंड हिज करियर्स उसको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था। अभी वापस आया तो थोड़ा रस्ट है, बट ही हैज नॉट लेफ्ट हिज गेम। यू नो नेकरॉथ वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मैंने उनके प्रीवियस मैचेस में भी देखा है टूर्नामेंट में कि अपोनेंट्स ने उनके नेकरॉथ को जरूर से जरूर बैन किया है। हाँ बिल्कुल, नेक्रोथ इसको, और नेक्रोथ से ज्यादा ये मेज जंगलर ज्यादा आउट ऑफ पोजीशन थे, पिकर मारा और काफी अग्रेसिव यहाँ पे हो गया। अंडर टावर किल निकलेगा क्या भाई साहब, यहाँ पे एग्जीक्यूट यूज करके यहाँ पे खत्म कर दिया लुबू को। लो एचपी पे यहाँ पे भागे हैं, दो थोड़ी सी एचपी लिलियाना ने बहुत अच्छा दौड़ाया, स्प्रिंट लगाने पे मजबूर कर दिया कैफनी को। ये ट्रेड थोड़ा महंगी पड़ गई यहाँ पे वैलहाला को। हाँ, पर आपने नोटिस किया हो तो फिर भी लंबर ने लास्ट मोमेंट पे क्रिक्सी और स्कैफनी को बचाया, S1 करके दूर बहुत बढ़िया बना है, मैंने आपको बताया। तो 1v बहुत अच्छा सपोर्ट खेलते हैं और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सिक्योर करके ले गए हैं नेकरॉथ। लिजी की तरफ से मैं देख सकता हूं कि अब देखिए वो लोग एक स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, बीट में हैं और शायद वो एक दूसरे को कॉल्स ले रहे हैं कि किधर की तरफ रोटेट करना चाहिए। नोटोरियस, आपको क्या लगता है इस गेम पॉइंट पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लिजी की, सिंस अब एक कमबैक कर रही है वैलहाला यहाँ पे? हाँ, तो इनको लाइक वही इनका एक ही स्ट्रैटेजी है, इन्होंने बर्स्ट पिक हीरो लिया है। इनका लाइक कंटिन्यूस फाइट का है ही नहीं, क्योंकि वायलेट कंटिन्यूस डैमेज दे नहीं पाएगी, तो इनको बर्स्ट करके एक प्लेयर को निकालना पड़ेगा, लाइक अलग अलग टीम फाइट्स लेके, क्योंकि 5v5 पे इनको दिक्कत होने वाला है जरूर।
और यहाँ पे टॉप का टरेट हमारी वायरस निकाल करके ले गई है और एक और टरेट इनके खाते में तो आया। यहाँ पे अकेले घुसे हुए रोनिन भैया, आप क्या बच के भागेंगे? सस्टेन देखो ईशो भाई, पूरे 4 का डैमेज लेकर के भी मीना वहां पे नहीं मरी है और नेकोरॉथ ऑलमोस्ट किल कर गया था लेकिन आउट प्ले करके यहाँ पे निकल गई लिलियाना। उनको टावर किल मारा एट्रो को भाई साहब, इसने लिलियाना को भी दौड़ाया, इसने उसके बाद में क्रिक्सी के साथ में मिलकर के खत्म किया वायलेट को और किल किया। यहाँ पे कैफनी डबल किल पे निकल गई है, वायरस को भी कर दिया है। क्या कम बैक कर रही है यहाँ पे वेलहाला भाई, यहाँ पे गेम खत्म कर सकते हैं शायद ये लोग। आप आउट पे देखिए किस तरीके का किया यहाँ पे। ओ सीसी हो गए यहाँ पे, लेकिन बहुत नाइस यहाँ पे सेकंड स्किल यूज किया, फ्लिकर यूज किया, भाग गए। देखते हैं क्या वो डिफेंड कर पाएंगे यहाँ पे वेलहाला के अगेंस्ट में। अच्छा पुश आ रहा है, टॉप के टावर्स भी जाएंगे, इनिप भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मिड लेनर का इंगेज कर दिया लेकिन पीछे भाग गए, टावर निकाला है, बैकआउट कर लेंगे। बहुत अच्छा खेल रही है यहाँ पे वेलहाला। लिजी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीना थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो रही है और वो जल्दी कॉट अप होकर के मर जा रही है, जिसकी वजह से एक डिसएडवांटेज यहाँ पे लिजी टीम को हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मीना को बैकअप थोड़ा लेट मिल रहा है। जब तक बैकअप मिल रहा है वो बहुत लो हो रही है। और आपने अगर एक चीज नोटिस करी फिर से, लाइक मैक्रो जैसे उनके एमएम पे गया था, उनके एस्टेट कैफनी पे आई जरूर थी पर मार नहीं पाए क्योंकि उनका लंबर ने उसको बचा लिया। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1B और किसामी की सिनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे अंडर टावर, यहाँ पे पोक बहुत अच्छी थी, है डाइव कर दिया एस्ट्रिड ने यहाँ पे कैफनी के ऊपर, लेकिन अल्ट नहीं लगा, स्प्रिंट का यूज किया, क्रिक्सी ने निकाला यहाँ पे एस्ट्रिड का किल, लूबू ने मार दिया यहाँ पे लिलियाना को, डबल किल हो गया है। यहाँ पे मीना भी चली गई है, वायलेट लो है, डबल किल क्रिक्सी को भी देखने को मिला। यहाँ पे वायरस किसी तरीके से 4 के बीच 1v4 कर रही थी, ट्रिपल किल पे लूबू है। गाइस ये गेम हो जाएगा यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहला मैच यहाँ पे वेलहाला जीत करके जाने वाली है, बेस्ट ऑफ 7 का मैच है। पहला मैच जीत, 2 मैचेस थे वो यहाँ पे लिजी जीत करके गई है। वेलहाला ने फाइनली कमबैक किया है यहाँ पे और मैच जीत करके जीत गई है यहाँ पे। सो नोटोरियस ही जो भाई, आपको क्या लगता है किसको क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पे इस तरीके के कमबैक करने का? मेरे हिसाब से तो नेकोरॉथ इज द एमवीपी। नेक्रोथ ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसने वोट फाइट पे लिलियाना को मारा, लिलियाना भागी क्योंकि टीम फाइट पे पोक नहीं आया। फिर उसने वायलेट को अंडर टावर मारा जा करके। यस, फिर जाके फिर से मीना को क्लियर किया क्रिक्सी के पोक के साथ। और क्रेडिट लंबर को भी दिया जाता क्योंकि उसने हर बार कैफनी को बचाया और हर बार उसने मैच को बचाया। सो मैं कहूंगा लंबर एंड नेक्रोथ एमवीपी। I'm totally agree with you guys. I'm totally agree with you guys. कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब नेक्स्ट मैच और भी जोरदार होने वाला यहाँ पे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू बीशो गेमिंग ऑन फेसबुक ऑल्सो, बिकॉज वहां पे भी हम बहुत अच्छे गेम्स करने वाले हैं इन फ्यूचर पे। हमारे स्पॉन्सर्स हैं, प्राइस पुल वगैरह की डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, दबा दो, लाइक ठोक दो अच्छे से कायदे से। एंड प्लीज शेयर ऑल्सो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट गेम में गाइस। थैंक यू गाइस। So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you was just a fuck up real bad. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.
get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like,
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. क्या बोलती पब्लिक, वी आर बैक अगेन। और इस बार मेरे साथ हैं हीजो तो मेरे साथ में कास्ट कर ही रहे, साथ ही साथ बीशुदा ने भी मेरे को ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। उनके साथ भी अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी वगैरह, कास्टिंग किस तरीके से होने वाली है यहाँ पे, आप लोगों को मजा आएगा। थोड़ा हम इंग्लिश हिंदी सब कुछ मिक्स करने वाले यहाँ पे। गाइस आपको बता दूं 3 मैचेस यहाँ पे हो चुके हैं, 2 लिजी ऑलरेडी जीत चुकी है और पहला कमबैक यहाँ पे वैलहाला ने किया है। तो 2-1 का स्कोर है यहाँ पे। गेम को चलिए करते हैं यहाँ पे स्टार्ट, चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर। थोड़ा मैं अपने स्ट्रीमर भाई से बोलूंगा स्टार्ट कर दीजिए मैच, जिन्होंने कर भी दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बीशुदा से पूछूंगा यहाँ पे, आपका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, पहला पिक आया यहाँ पे लिजी के हाथ में, वो क्या बैन कर सकते हैं बीशुदा? Yeah, Ronin, I think he will go with the usual ban. Could be the skirt, could be this time, could be a marksman from. I think they've learned something from the previous game. So could be a marksman. Oh yes, so it's a respect ban then. It's a respect ban. Lungu is out. या इट इज अ रेस्पेक्टेड बैन। उन्होंने देखा कि 1B की किस तरीके की सिनर्जी थी, कितना अच्छा वो लंबर खेल रहे थे यहाँ पे, तो इंस्टेंट बैन मार दिया यहाँ पे। अब मैं हीजो से पूछूंगा कि पूछने का मौका ही नहीं दिया, इंस्टेंट बैन मार दिया यहाँ पे यू। मगर कोई बात नहीं हीजो, यहाँ पे सेकंड बैन बताओ कि क्या टीम लिजी और वैलहाला करेंगे यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो हायाटे बैन करेंगे, क्योंकि हायाटे बहुत ब्रोकन है। इनका तो फर्स्ट पिक है ना, तो इनको तो चांस मिलना चाहिए हयाटे का यहाँ पे, जो हमारे रियूबन है यहाँ पे। यस, पर मैं आपको बोल दूं कि एट्रो MM यूजर है, बट उसका हायाटे उस लेवल पे नहीं है कि वो खेल पाएगा। लाइक खेल तो पाएगा बट नॉट दैट लेवल। आई थिंक लगातार यहाँ पे मुझे दूसरी बार भी लेवल बैन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो कैफनी पिक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों यहाँ पे। बीशुदा आप बताइए यहाँ पे रेंजर द डेंजर क्या बैन कर सकते हैं? Wow, it could be another 2 lane. Yes. दो मेज बैन की तरफ से। And yes, Ronin does steal the Hayate. And this is a nice. अभी बताओ जो यहाँ पे क्या कहना है तुम्हें, एट्रो का हयाते अच्छा नहीं है? अब देखो एट्रो ये हयाते खेलेगा यहाँ पे। नहीं, आपको मैं गलत साबित जरूर करूंगा। आप बस नोटिस करना, स्पाइक हयाते करने वाला है और स्कर्ट जंगल जाने वाला है एट्रो मेरे हिसाब से। दिस इज यहाँ पे चेंज कर देंगे रोल। यस, दिस इज वन ऑप्शन। और एल्स प्योरमैन वेरस जंगल करेगा और स्पाइक ये MM खेलेगा और ये DS जाएगा एट्रो। सो इस बार यहाँ पे रेंजर द डेंजर ने तुरंत लिलियाना उठा ली और मीना उठाई है बनवी ने यहाँ पे। मैं बता दूं ये मीना भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ये लंबर भी बहुत अच्छा खेलते हैं। हालांकि अब तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे कैफनी जैसा पिक हमें देखने को मिलेगा टीम वैलहाला की तरफ पे। चलते हैं लिजी की तरफ, यहाँ पे क्या पिक्स हमें देखने को मिल सकते हैं शुदा आपके हिसाब से? Hello, Bishuda. I think they will try to. Yes, it could be 10 and it could be like another Wukong or like a burst one to catch one of the heroes. I think they need a hero which has a high mobility. Yes, it could be good if they have this Lumia because of her universal ulti and all. Yeah, crowd control, then burst damage, and I think from the red, I think they would be liking to get another hero with much faster mobility like Violet. But let's see, it's a 5-man game. Let's see what they make up. Okay, I think they are going to go for the whips. Actually, go on. यहाँ पे ये विस्प को दिखा रहे हैं, मगर एक चीज पे मैं बात यहाँ पे अपने हीजो भाई से करूंगा कि टीम लिजी ने यहाँ पे सीसी को तो बहुत ले लिया। लाइक उन्होंने यहाँ पे इलुमिया को उठा लिया, उन्होंने यहाँ पे थेन को उठा लिया, मगर लिलियाना जैसा अपोनेंट आपके टाइटन सामने खड़ा है जो बर्स्ट डैमेज करता है, इतनी जल्दी आपके हाथ में आता नहीं है यहाँ पे। और मीना भी अगर यहाँ पे रिबुन को पकड़ लेगी तो इतनी जल्दी इवेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि उनके पास में सेकंड है, लेकिन साथ ही साथ क्लेंजिंग होती है यहाँ पे उनके पास में। फाइनली विस्प यहाँ पे लॉक कर दिया है हमारे जानी ने। एक बैन भी आ रहा है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा हिजो से कि बैन क्या आ सकता है, उसके बाद में मेरे सवाल का जवाब। मेरे हिसाब से देखो इनको जंगलर और DS लेन चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये लोग शायद वेरस बैन करेंगे, क्योंकि वेरस कैन बी प्लेड इन जंगल एंड DS बोथ।
तो वेरस बैन बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है। आप एकदम सही आप जा रहे हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लेकिन स्कट किया है वो भी एक काफी ज्यादा टैंकी हीरो हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया है। एट्रो के हाथ में यहाँ पे बैन आएगा। और अभी हम चलेंगे स्ट्रेटेजी की बात जो कर रहे थे हिजो, वो आप बताइए यहाँ पे। हाँ, देखो मैंने पहले ही बोला था कि स्कर्ट पिक हो सकता है कि इधर, क्योंकि एट्रो स्कर्ट जंगल जा सकता है, तो उन्होंने टीम्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया और रेस्पेक्ट बैन फिर से मैक्रोथ हुआ है। भाई दो रेस्पेक्टिव बैन देखने को मिले। लंपर ने कैरी किया था और नेक्रोथ ने तो वही दो बैन कर दिए यहाँ पे। देखते हैं इस बार मिरियम क्या खेलेंगे। हालांकि कीसामे के हाथ में यहाँ पे बैन आया हुआ है, चौथा बैन। क्या कर सकते हैं विशुदा यहाँ पे, क्योंकि अपोनेंट ने अभी तक कोई भी डीएस लेनर और जंगल नहीं उठाया है। Yeah, it's hard to predict, but I think they will be needing for like a burst damage or could be a good side laner. Yes, Omen. Yes, Omen. Omen ओमेन is यहाँ पे किया है। Omen. तो साइड लेनर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे बैन कर दिए। मेज का कर दिया है। 24 के प्योरमैन के हाथ में बैन आया है। ही जो बताइए क्या कर सकते हैं लास्ट बैन। अपोनेंट ने अभी तक यहाँ पे डीएस लेनर और साइड लेनर नहीं लिया है। बैरस आप मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि शायद ये ले सकते हैं, नहीं तो बैन कर देंगे। हाँ, वेरस बैन भी कर सकते हैं या तो एलन बैन कर सकते हैं, क्योंकि रेंजर बहुत अच्छा एलन खेलता है डीएस पे। अच्छा अच्छा, तो रेंजर के लिए यहाँ पे एक और रेस्पेक्टेड बैन। चारों के चारों फैंस यहाँ पे रेस्पेक्टेड है। यही होता है जब ज्यादा मैंने और आपने आपने देखा क्या